editor लेंगे पलक के नीचे का नाम लिख ऐसा मारोगे ना। Good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. Knowledge is the key that unlocks the mysteries of truth, and forensic science is the bridge that transforms evidence into justice. With this inspiring thought, I extend a very warm and heartfelt welcome to all our distinguished guests, eminent resource persons, respected faculty members, researchers, students, professionals, and participants joining us from across the country and beyond. It gives me immense pleasure to welcome you all to the 5-day online lecture series on forensic science beyond boundaries, innovation, research, and justice. Organized by the Department of Forensic Science, School of Liberal Arts and Sciences, Modi University of Science and Technology, Lakshmangarh, Rajasthan from 10th to 14th July 2026. Forensic science has evolved far beyond the traditional laboratory. Today, it stands at the intersection of cutting edge technology, artificial intelligence, digital investigations, biotechnology, psychology, law, and criminal justice. Through this lecture series, we aim to bring together renowned experts from academia, forensic laboratories, enforcement agencies, and industry to share their expertise, experiences, and the latest advancements shaping the future of forensic science. Over the next 5 days, participants will have the opportunity to explore emerging trends, innovative research, practical applications, and real world case studies across various domains of forensic science. We hope this platform inspires meaningful discussions, collaborative learning, and professional growth for everyone involved. Before we proceed together, I would like to acknowledge the visionary leadership whose constant encouragement and support have made this event possible. We express our sincere gratitude to our chief patron, Professor Dr. Ashutosh Bharadwaj, or Honorable President of Modi University of Science and Technology, for his unwavering support and guidance. We are equally grateful to our patron, Professor Dr. Abhay Sharma, Pro President of Modi University of Science and Technology, for his continuous encouragement and commitment towards academic excellence. Our heartfelt appreciation also goes to our convener, Professor Dr. Jitendra Benwal, Dean, School of Liberal Arts and Sciences, whose leadership and vision have been instrumental in organizing the lecture series. A special word of appreciation to our organizing secretaries, Dr. Samir Saharan, Head of Department of Forensic Science, and Dr. Mrido Sharma, along with the dedicated team of Joint Organizing Secretaries, Dr. Spriha Sharma, Dr. Rakesh Meena, and Ms. Shelja Singh, for their meticulous planning and tireless efforts in making this event a reality. Dear participants, your presence reflects your enthusiasm for learning and your commitment to advancing forensic science. We encourage you to actively engage in every session, interact with our esteemed speakers, and make the most of this unique learning opportunity. With this note, we would like to introduce our esteemed resource person, Dr. Ranjit Singh. Dr. Ranjit Singh is a distinguished forensic expert with over 19 years of experience in question documents, cyber forensics, and fingerprint examination.
He is the managing director of SIFS India Forensic Lab, providing forensic consultancy and investigative services to courts, law enforcement agencies, government organizations, insurance companies, and corporate clients in India and abroad. He holds an MSc and PhD from the University of Delhi and is a certified CEH and CHFI professional from EC Council. Dr. Singh has authored numerous national and international research publications and books and has delivered expert opinions in thousands of forensic cases. An internationally recognized trainer and speaker, he has conducted forensic training programs for police personnel, forensic professionals, and academic institutions across India and several countries, including the USA, UK, Ireland, Australia, and Africa. He is a global advisory board member of EC Council and is committed to advancing forensic science through research, education, innovation, and international collaborations. Thank you so much, sir, for joining with us today. Over to you, sir. Thank you. Thank you so much, Bhumika, for such a generous introduction. So thank you everyone for being here in this particular lecture series. And I'm glad that I'm also be the part of this particular series. And hopefully my screen is visible to all of you. I once again thank you, the management from the Modi University, Professor Astos Bhardwaj sir, Professor Abhay Sharma sir, Jain sir, Sameer sir, Pridhu ma'am, Shripa ma'am, Rakesh sir, and Shalja ma'am, and everyone present here. Thank you for joining this online lecture series, which is a great initiative by the Department of Forensic Science, School of Liberal Art and Sciences, Modi University. And the topic which I want to discuss with you, uh, particularly that is for the student, I'm sure that many of things is very much clear for the faculty member and other participants, those who are the researcher, scholar, or other. But for the student, particularly those who are in the BSc or those who are in the MSc, so I'm just going to give you some view about how you can enhance your skill, because at present, not only in the government sector, even in the corporate sector, we require lots of forensic science services. So I'm going to discuss about the forensic science, how the artificial intelligence powered crime scene nowadays is required by the corporate investigation and also by the defense, not only from the prosecution but from the defense side, to understand that if some new technology has been opted to solve this crime, so what kind of new innovation going into the forensic science? As we all know that our law has been changed from 1st July 2024, and we make a compulsory visit of the forensic expert so that they can, where the conviction is 7 years or more. And believe me, in the future, it is going for all kind of crime where we have the scientific evidences. So I'm going to talk more about the how the legality and technology work together. So techno-legal expertise is very much required whenever we talk about the forensic science. So with starting, as we have a exact 1 hour to complete this discussion, so I'll try to cover within a time. So we know that artificial intelligence. So I always say that artificial intelligence know many things, but doesn't understand anything. So if I given a prompt, I'm sure that this kind of caricature you all have created for yourself. And when I given a prompt that search my profile, my name is Dr. Ranjit Singh. I'm working as a forensic expert in SIFS India. So these three things the AI has captured very beautifully. Dr. Ranjit Singh, forensic expert, SIFS India. But I'm not that doctor who can carry the stethoscope. So AI know many things but doesn't understand anything. So they just make a doctor by having the prompt doctor. They have created such kind of caricatures. So even you can see many things which is artificial intelligence doesn't understand. We being an expert need to use our human intelligence so that we can properly train the artificial intelligence machine, so machine can be modified as per the requirement, and then that outcome can be used for the future solving of the crime. And there is lots of myth also we are having in the artificial intelligence.
When I given today, even for one of the recent case today, I'll try to show that in the last also, because I just completed the analysis a few minutes back. So there was a UP police vacancy where they had given a fingerprint, which is a loop pattern, to enhance the police officers, the team which is enhancing. They have uploaded this to the AI tool, Cloud or maybe ChatGPT, to enhance the SD quality. For making the HD quality, that loop pattern they have converted into the wall pattern. And just on the basis of their uh, unofficial, or we can say a small training, they know the difference between the pattern, and they rejected the candidate on that basis. Whether this reached to the Allahabad High Court, and then they seek for the expert opinion that how this person who is present in the examination hall having the CCTV footage and his fingerprint is not matching, and not matching at the, not at the secondary level, not at the tertiary level, it is not matching at the primary level, not from the any of the 10 digits. Might be there is differences. So artificial intelligence we have to use with a very precautionary measures, and that is a live example today. We have just see one case, and where in even in the loop and wall pattern, 7 rich characteristics are the same. Means the core point AI doesn't understand, they converted it into the wall pattern just to make the SD quality and the clear picture of. So that all things we need to be very careful about when we are using the artificial intelligence or any tools which is AI powered. So AI powered crime scene I'm going to discuss today about what is a AI powered crime scene. As we know, forensic science has several branches, and every crime scene have a different kind of challenges, from biology to the chemistry to physics to the medicine to the digital or multimedia. Every crime have their own challenges, and at every crime scene, once we started the learning term called artificial intelligence, we are having a hope that this can be solved very easily by using the tech tools and technology which is AI powered. And nowadays on daily basis we are receiving cases. Apart from the cases, we are receiving the call request from the police officer, sir, you use the artificial intelligence tools, you must have the artificial intelligence tools, can you clear this CCTV footage and give me the number or give me the face of the individual, which is actually not the as easy. They are saying it's not as easy it is converting and getting the data from either it's a photograph of the individual or it is a number of the vehicle. So challenges is always there. So all forensic science field have their own challenges, and every field required to have some kind of artificial intelligence, because there are many myths and misconceptions we have into the field where they think that forensic scientists can do anything. They just think that yes, they have seen some serial, some movie, although I have also made 4 or 5 movie, but unfortunately cinematography is altogether different things, where misconceptions and myths are more into the area, and that is not with the normal public. If it is normal public, I'm very much okay. That is with the law enforcement agency. They have a very high hope with the forensic science. So we have to use this kind of things where the myth and misconception should be go out, and people should understand the reality of what examination can be done into the forensic science. Because when we talk about the forensic science, we discuss about the advanced technology, we discuss about the what we can do into the tomorrow, and we believe that in forensic science, what if the truth speaks and even the people cannot? And that's we believe in the forensic science. And that's why you have seen now from last 5, 10 years, if you have seen the media reporting, call the forensic expert. The forensic expert will do like this, like this. So many such kind of things we are having. A recent case which is going on a very highlight, Pune case, I'm assisting in that also. So I will discuss that into the last part, that how we are using the artificial intelligence and how we are assessing the things into that particular crime. So the truth which is scientifically proven only can be assisted by the forensic scientists, not the people say, and not by the different theories which we have. Because now this scenario has changed. The physical crime scene has converted into the digital crime scene. The visible criminal now, they are the invisible criminal. They are even sitting in front of you. They are using the VPN, you cannot trace them. So invisible criminal you will find. And local crimes has been converted into the global crime. Initially, there are, if I'm not sure that, but maybe the senior people, those who are in the group, they might have heard about the special police officers.
So a special police officer means is a kind of person who give the information that who can do this crime from the locally. Like if I want to know that who has done this kind of things into the Modi University campus, so I'll have some kind of a special police officer like Bhumika, like Palak, जो पलक ने भी बोला ना कि चुप हो जा नहीं तो मार दूंगी मैं तुझे. So some kind of tips information we can get from the local tips, but now the scenario has changed. Scenario has completely changed. Local to the global. The people sitting into the Libya, sitting into the different country, they are running the gangs for creating a crime, which is, I'm sure that you have heard about the term called cyber slavery, where they are hiring the people, those who are very educated, they are M.Tech, B.Tech people, they are hiring them, getting a good salary package, come to the Dubai, come to the Ethiopia, they are taking to the different country. You are not at all aware about what is going to and what you are going to do over there, because they are conducting these interview into the five-star hotels on the banner of good and big company's name, and after that they are taking you to some kind of storeroom which you have seen. I think there was a series where they have taken all the people into the money heist. I think they have taken all into the one place, so something like that. You become the slave for them. You will get the food. You will get all kind of pleasures. Just you have to do the crime for them, and it's very difficult for local and nearby area by having some kind of my special officers like Bhumika and other people. But I cannot get the people those who are into the Ethiopia. I do not have the direct contact. So the scenario had changed, and that's the investigation need to go for such kind of deep analysis, such kind of deep investigation is required, and where the artificial intelligence comes into the picture. Why we are more talking about the artificial intelligence? As you know, every field is talking about artificial intelligence. It's not only the forensic people talking about the AI, agriculture people are also talking about the AI. Just click the photograph of the wheat field or sugarcane field, what kind of chemical they can use, what kind of product they can get, how much revenue they can get. Everyone nowadays talking about the AI. So particularly when we talk about the forensic science, so in forensic science, AI is using for transforming the crime scene by enhancing the speed, accuracy, where the people usually come later. They do the photography, videography, they hire the contract photographer, they come, then they do. But now, by having the 3D scanner, people can do very easily with the more speed, more accuracy. And later on, that evidence can also be analyzed with the proper detection. Sometimes they miss, sometimes they do not miss the evidence, which sometimes police agency miss, sometimes law enforcement agencies miss, where you see some kind of seeing the photograph we got. But having such kind of evidences from the scene of crime, we can put some kind of good prompt with the good machine learning, and they can create a crime map. From that crime map, we can get a more idea, which is called the AI assisted investigation. When we talk about the AI assisted investigation, where we have the large volume of the data, we have many photographs, we have many weapon, many other things. So that large volume of the data, they can help through the artificial intelligence to identify the pattern, and that pattern maybe lead to the reaching to some human being, reaching to some supporting evidences, and then the law enforcement agencies are very much into the portion to make a proper decision. So proper decision through the accuracy, artificial intelligence very important tool. Again, artificial intelligence know many things but doesn't understand anything. To understand, we have to use the human intelligence as well. Like if we have put some kind of 3D scanner, furrow, we have scanned all these angles, but pointing all these angles proper, even if you change a 1 pixel, I'm not telling about the millimeter or micrometer or nanometer, even 1 pixel you will change, these angles will give you some kind of variation, where you will put the proper prompt for analysis of such things, so machine can understand your requirement and they can give you the more accurate angle. Like in this supportive picture, 9.27 degree, can a human with any kind of sophisticated tool do such kind of sharp measurement, sharp accurate measurement? Not possible. So that's why these are the tools which is very important
like this is a Faro, Leica, many other techniques. And recently, those who have visited the Police Expo here in New Delhi, so they have more sophisticated tools. People from Croatia, they come, scientists from the Croatia, where they have explained. One scientist from I think Malta, from one of the country in the Europe, they come with some very small tools of the document examination where they have the UBIR. It's a kind of mini VSC, and that is a artificial intelligence. They, by having the spectrum of the ink, they can say either they are the scan or they are the penmanship. They have some kind of penmanship. So again, they are giving the primary examination. To conclusive examination, we have to be examining into the our own human intelligence. So these kind of things are very very important, that we can create the crime scene documentation by using the mapping, by using the sketches which they have, by feeding through the API. If we integrate some API of that particular geolocation and maybe some kind of geotagging from that particular area, we can get, if we can integrate this with the tower location dump data mapping, we can track the movement. So these kind of documentation play a very very important role, where manually, by having all these data were not that we are creating some new data. These kind of data are already existing earlier also, but now with the help of AI, we are just more sophisticated to come at the conclusion. Like dump data is earlier there, but now with the tool we can map that where the person was, at what coordinate this moment happened. So such kind of things become a more easy when we have a, using the artificial intelligence. Yes, Dhani, you want to ask something? You raise your hand. Oh, maybe later we can take all the questions. So maybe by mistakes, Dhani has raised the hand. So by having the proper documentation and with the mapping, with the proper recording of the coordinates, by having the proper hash value, because nowadays court is also asking a lot about the hash value. To be very frank, they doesn't know what is a hash value, but they want to ask because they have learned this into the training, so that they can make some questions. What is a hash value and what is the importance of the hash value? Even one of the judicial officers, sorry to share, because you all are the students, you need to understand. Recently one of the judicial officers said that नहीं sir, ऐसा नहीं होता है, hash value तो खत्म ही हो जाती है अगर file edited है तो. So I said no, the importance of hash value is not like that. Hash value even we can find from the deleted file, even from the edited file. If the file is edited, manipulated, there is a hash value. The importance of hash value is to compare the data which have been procured from the primary and produced into the secondary source. What is primary source? What is a secondary source? So I said, sir, primary source means a mobile phone from which the picture has been taken. That picture have a hash value ABCDE. When they are transferring this hash data to giving into the pen drive to the police agency, that ABCD should match whenever this police agency doing the examination or sending to the FSL. So that is a corroborative maintenance of chain of custody. And that very basic things, they are not aware. They know that, oh, hash value is something that we have to ask from the expert. Either you have noted the hash value or not. And to be very frank, we are enjoying that, sir, hash value to mention hai. So they think that if hash value is there, file is genuine. So such kind of, techno legal expertise is lacking in our country. Those who know the legality, they do not know the technology. Those who know the technology, they do not know the legality. So it's a very important to have the coordination between the techno legal expertise, and that's the artificial intelligence is using. And believe me, 99.9% Indian population understanding AI is the chat GPT. पहले हम सारा काम गूगल पे करते थे, now we are doing on the chat GPT. More sophisticated version, multiple link नहीं click करना है, one link पे करना है, and you all student doing. तो वो AI नहीं है, that is just a modified advanced search engine. Nothing better than that. Nothing better than that, believe me. Until unless you are not know about the technology behind that, you are using that prompt. So even you can put any nowadays, put any postmortem report, they will give you the good analysis, and sometimes they are giving their vague analysis. So I used to do, recently I did for the Trisha Sharma postmortem report. I got from some media reporting, and then say that
can you give some opinion? I said, sir, unfortunately, I cannot come into the media because I'm not the forensic medicine expert. But yes, I can give you the analysis about this postmortem report through the artificial intelligence. And the analysis was so vague, so vague. मैंने कहा, I will not share this. Otherwise, you will run with the sources of the forensic expert. We have verified that there is a chances of the murder in the case of Trisha postmortem reveals. एम्स वाले जो डॉक्टर राघवेंद्र मेरे दोस्त है वो कहेंगे क्या बोल दिया तूने ये सो it's a very important that whenever we are using the technology we should be accurately use the technology with the proper knowledge. So why we use the artificial intelligence? So AI in the crime scene, it is give a automated 3D crime scene reconstruction with the laser scanners and the photogrammetry. From that photogrammetry, court can understand where was the knife, where was the body, what was the movement. Each, coordinate by coordinate, they can assist. Earlier, sometimes police officer do not reach at the crime scene, they give that, oh, I have done this crime scene sketching. So they ask that null kaun se side with her, left or right. So they do not know because they have not visited the crime scene. But now through this 3D automated crime scene, we can accurately convince the court that this is the laser scan things which you are using, and you all can use. I'm sure that those who have the iPhone with the Pro Max, you have the black camera over there, that is a Leica camera. From that you can use the 3D scanner app, and from 3D scanner app you can scan the crime scene. And by having the scanning crime, which we have used in our movie Forensic, so Vikrant was doing that scanning, so we can use that data can helpful into the assistance for the court. On these AI assisted panoramic images we can stitch. So if you think that if you have seen in some movie or something that crime scene scanning is there, they're doing all the things, it's not like a one go. They scan the multiple with a different degree of the angles, and then they merge, stitch, and make one kind of render images which the code can easily understand. So that stitching from one point to the other point is again a very precise work for the forensic, because we measure the injury into the millimeter, into the centimeter. For not for the other people, those who are doing the archaeological survey of India, they are doing the crime scene scanning or scanning of the scene of the building for the development of the restoration, other purposes. The same scanner used by the two different people, two different kind of measurement, two different kind of precautions we have to use. So that such kind of stitching of the images is one expertise required by the forensic student, forensic professionals. Then automatic evidence tagging into the photograph. So if you have learned, if you not, you can go through the video which we have done on our lecture series by Vujian Jaivold. So he's from the Germany. He is using the Microsoft HoloLens. So that Microsoft HoloLens is having a tagging of the photographs. At one place, how many evidences are there, you can tag through the VR, and that you can present at anywhere, any place at same kind of measurement you can get. Then a twin creation of the crime scene. If one crime scene having this kind of data, so digitally if you're twinning, creating another crime scene and giving some other prompt, what kind of data you can get. Then voice to text scene notes, that is very important. And even not only in the forensic but any industry. Recently I saw that one application, Pocket Wakil. So initially when we go there at the police station, we have to make them to understand what crime happened. Then the police officer will consult with their colleague. Then they call the munsi, those who write the tahrir, and then they convert into the FIR ki kaun sa section lagega. Now they have made one small application with the integrated API of the Kanun, Law, Purpose, Bar and Bench, and you just give the recording कि this happened, I was there, मेरे साथ ये हुआ, ऐसे मारपीट हुई, मुझे इसकी FIR करनी है, इसकी तहरीर. So everything they will create with a timeline stamp. So why to text crime scene noting is become a very easy if we are using the AI assisted applications. Crime scene mapping using the drones and the artificial intelligence. So drones, everyone talking like as we are talking into the era artificial intelligence, हम सब लोग drone की भी बात करते हैं. Drone is like our own helicopters. मेरा भी बेटा जाके अपना उड़ाता रहता है कि उस लगता है वो पायलट बन गया है. So because the country like this, we do not have the drone licensing as well, or very few people those who are having. When I was doing the shooting for the movie Kathputli, so we have the scene of the
drone, where the crime scene at the first crime scene we are doing, where Akshay was about to reach, and that drone goes so near to the Akshay. So Akshay said कि does he have some kind of precautionary measurement? मुझे भी चोट लग सकती थी. So license ही नहीं है. But yes, we are using that drone technology. Police is using without having the proper licensing and other things. While the other country have the licensing, but apart from that, drone mapping is very important aspect. When we are getting the images, we need to correlate that with the the surface crime scene scanning which we have done and the aerial crime scene scanning which we have. If we merge both the crime scene, then we can get some kind of good idea about what actually the movement of the criminal and how the even for the blood pattern analysis or anything we can very easily predict. Why use artificial intelligence more? Because we can get the faster documentation, we can reduce the human error, we can give the permanent digital record, we can improve the courtroom presentation. So recently I did even on 7th I submitted the report for one of the digital investigation, where the Winjo app, game app, I'm sure that you have heard about that. So that Winjo app game was they have done some kind of, they were accused of doing some kind of goat related query, where they have make a business of around 2500 crore, 2500 करोड़. तो हम लोग तो सुन के भी लगता है कितना पैसा होता भी है. हम लोग 3-4 बार पाकिस्तान खरीद सकते हैं उतने में. सो इतना पैसा होता भी है, बट पीपल आर मेकिंग, एंड दैट इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू डू कि बोट, हाउ वी कैन गो फॉर द बोट एनालिसिस. सो हियर द डेटा एंट्री इज 28 lakh games. One person is having the playing with the sets of 5, so 5 into 5, it is giving a data set of the 25. If they have the 18 moves, like हम जब लूडो खेलते हैं ना, इट्स अ गेम ऑफ लूडो, व्हेन वी क्लिक द लूडो, सो क्लिकिंग का वन लाइक है, जो नंबर आ रहा है 3 4 5 6, उसका एक डेटा में एंट्री जा रहा है. जब वो मूव कर रहा है, हर एक स्टेप पे उसका अलग मूव है. एनालाइजिंग ऑल दीज डेटा मैनुअल, इट इज इम्पॉसिबल, nobody can do, even required a year and years. But just by putting this into the Python, some query, write the prompt, and by that getting a good graph, ki 0.6% people who are out of 28,000 complaint received is 0.6%, 0.67% people are only those who are using the board technology. So this is very useful for the police, which they are coming into the investigation with a less knowledge. Evidence detection, again, the Foster Freeman and many other institutions or many other instrument making, they are making a tools. From that you can detect. Usually what we learn into the hour, when I started learning forensic science, we have to collect the blood from the crime scene. First we have go for the preliminary test, right? Then we have go for the confirmatory test. I think आप लोग करते भी होंगे कि बेंजीडीन टेस्ट करते हैं, टिकमेंट टाकायामा टेस्ट, राइट? मैं थोड़ा बायोलॉजी भूल गया हूँ, तो हो सकता है टर्मिनोलॉजी मेरी कुछ अलग हो. So other like Samir sir and Isprah ma'am can correct me. So we go for such kind of traditional test कि crime scene पे blood है या नहीं है. Either we have the blood from, but now they have to detect, they have a tools. From that they can detect either they are the which kind of evidence, biological evidence, or there is saliva present or not, blood present or not, semen present or not. So these kind of things, and through the thermal imaging they can find it out. Either the which is a country, not our country, whole world, because I travel a lot. So like next week I'm going to Taiwan. Earlier I was in the Hong Kong. So all these countries are having same kind of problem. So the problem, what is the problem we are having? We are having a fake images. We are having a problem of the fake, everything nowadays in the digital world is very difficult to identify what is fake and what is genuine. We are making a AI detected tools. That AI detected tools are very good, but believe me, they are not 100% true. They're not giving the good result, because how we can assure that until unless we are not doing the control test. And that's why, if you remember in your chemistry class, our teacher say that do the titration 3 times at least minimum. My teacher said that you have to do 5 times. Why? I asked, madam, why? And then you are asking to get the average of that particular test, because human can make a error.
Similarly, the artificial intelligence machine also can make error. That error we need to understand, either this is actually error by the machine or by the tools or by the human, those who are giving the prompt not properly. So that evidence detection is very, very important. So when we talk about the location of the evidence, through this, sometime human, when we are going at the crime scene, we might not be able to see that evidences, which recently happened, I think, if I correctly remember, in the Jaipur or in Kanpur somewhere, where the wife, they uh, cut the husband and put into the washroom, then tile and other things laga diya, right? So that there must be some evidences. And similarly, in many cases, either our professor, when we were student, VN Sehgal sir, he used to say that someone has burned someone, some bride in the dowry cases, and then they paint the whole the wall. After that, they chip off the things, and then they able to identify that there was a paint available into that particular wall. So, but now the things has completely changed. We do not have to go for such a rigorous exercise. So detection tools are there, and which overlook maybe a blood pattern, maybe a latent fingerprint, maybe a shoe print, maybe a weapon recognitions, what kind of biological evidence is there, what kind of trace evidences we have. These kind of artificial intelligence trained tools can identify from the scanning images which we have from the scene of crime. Like we have scanned the scene of crime through the 3D faro like or any kind of tools. So by having the technology, computer vision, deep learning, or image segmentations, they are detecting the object, and after detection of the object they are giving the things. Now it's a duty of the police officers to find it out. Yes, because if ultimately our court, our judiciary is not that much enhanced, that if you say that by having the spectrum or by having the color, learning this is a blood, no, you have to identify this is a blood. Not only you have to identify this blood belong from the victim or not, so you go for the DNA. So that DNA examination might not be useful by having such kind of spectrum analysis tools and software. So it's we need to have the amalgam of both artificial intelligence as well as the human intelligence. Both are very, very much required. So in the BPA, particularly many cases nowadays in foreign country and also in the India, they are using the blood pattern analysis. Earlier, it was a very, very ignored, very highly ignored field, but now people are using because a crime has changed from blue drum to the green drum. सो रिसेंटली अभी क्या क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है कि कौन से ड्रम में आदमी मिलेगा, किस टाइल के नीचे मिलेगा. सो सच काइंड ऑफ blood pattern analysis is nowadays they are using advanced technology where they want to understand, because earlier they said that अरे खून तो दीवार पे मिला है ना, but now they want to understand how this came, what was the process, what was the angle. So they are using such kind of algorithm to understand the spatter angle, to directionally impact velocity, the origin, area of the origin, the pattern, cast off pattern with a higher consistency, faster calculation. Otherwise, earlier, which we also do in our institution for the training, drop से गिराते हैं, रस्सी बांधते हैं, फिर measurement करते हैं. So all these kind of things now, if you are using a good technology, we can get into the more higher, faster, and consistent speed, like anything. So we can just have that VR kind of images and VR rooms, and from that VR rooms, we can get the individuals that yes, this is the angle from here, the angle walk. This is the person where virtually they can understand. Yes, this person was standing here. Okay, let's move for the 2 degree more. From that 2 degree, what can be the angle? So all these kind of analysis, crimes and reconstruction is very, very useful. And from that reconstruction, investigator can find it out what could be the subject path if they have the good kind of footprint or gait pattern, proper gait pattern analysis or something CCTV footage. So crime scene reconstruction is also nowadays become, and you have seen in almost all sensitive cases, and such cases happen daily basis. Arushi murder happened daily basis in Indian scenario or world. But that one case come to the media, see a kind of cases happen. It's not that one cases, or Muskan is also, right? So these kind of cases are there, but still
when we got some kind of cases which comes into the media limelight, and every cases you have heard about the crimes in reconstructions, they go सिमिलर वेट ऑफ द बॉडी एंड बोलते हैं कि धक्का दो, बाद में वो बॉडी वहीं छोड़ देते हैं, वो अलग बात है, 3-4 दिन तक. So that crimes in reconstruction is also a very demanding field, and if you have a good expertise into the crimes in reconstruction with the technology, whatever the scene you are getting, even by reducing the weight here and there, you can, because all these are the approximation. It's not that with the accuracy you can say that okay, this is the things happen, these things have been happened. So, but we have to predict that a reconstruction. That's why it is either it comes into the form of estimation or it is come into the form of estimation, not with the absolute value. So crimes in reconstruction is again a very, very good field. And those who wants to make your career, you can learn the advanced technology of the Faro, like and other, and make your expertise, make your things as a crimes in reconstructions specialist. That is not only in the police cases, in the cases of accident reconstruction, in the insurance sector. And insurance sector, believe me, there daily 434 on an average cases are coming for accident reconstruction where the someone hit and the claim is crore rupees. So in Delhi, they are having 400, 300 crore claims. Last year, it was, I think, 22,000 crores claims by the accident reconstruction, but they do not have the proper technology. They do not have the proper reconstruction methodology. Either the fault of the insured or the fault of the insurer who was on the faulty side for that particular accident. Either they are drinking, what was their movement, how they can get the data, digital data from the cars, because nowadays all the vehicles are having restoring the digital data, mapping that digital data with a scanned crime scene. So all these things we are doing for the some sensitive cases where the insurance company are able to hire that services, because ultimately these tools technology are costly. So in every case we cannot apply, but yes, if their stake is high, they are using such kind of reconstruction. So that is a one high recommendation for the students. If you really want to make your career, try to learn the crimes in reconstruction. That is not only for the police, that is for the many industry, for the private, even sometimes for the corporate. They just want to know any case, just want to understand what actually happened. If there is something broken into the Bharuch area, there are chemical factories, how this has happened, what could be the reason. So all these, your expertise will going to be very, very helpful. So you can see that how the crimes in reconstruction is going to be useful for many industry by having the different angles. You can measure, and you being an expert, because sometimes we have the fear that computer is one, we do not want to learn the technology. It's very easy. It's just like watching a Netflix, until unless you are having the interest into Netflix. So if you can watch on web series, you can learn in the similar time on AI tools with a good, even better technology, because if you want to learn. So that is a very, very important aspect. So in the crime scene reconstruction, artificial intelligence reconstruct the sequence of event by the blood pattern, by the ballistic trajectories, body position, witness statements. Sometimes I have a tool which is called Emotion Logic AI, which is equivalent to LBA 7.0. And that LBA 7.0 is having the witness statement analysis. When the witness is giving some kind of statement, we just have to record the statement. After recording that statement, we have to put that statement into the particular AI tools. And from that analysis of that particular statements, they can come to the conclusion that either this person is telling lie or not, or what are the facts summarized they can give. That I have. And sometimes if I visit personally, I can give the workshop also on that particular emotion logic AI tools, which is nowadays very much we are using into the corporate investigation, where there is a fraud cases, white collar crime fraud cases. They just have to interviewing the people. By having the interviewing, we are just putting the statement and we are getting a good result. And ultimately, they are coming into the form of confession also. They are, yes, this is a true. We do not want to go for the litigation. Let's close the with the recovery of the cases.
Then CCTV footage, which is we are receiving on a daily basis, mobile phone data. Mobile phone data, particularly, I'm very closely working with the Narcotics Control Bureau. We are having 100 to 50, 100 to 150 cases every month for mobile data extraction, and they wants to understand either these mobile is involved in some kind of drug dealing or not. So manually reading chat, manually doing the analysis of all the images is not possible. So we have made some kind of tool where we put the images into the library, they segregate if there is some term called any medicine name, any RX, BP, IP. So all these expiry date, all these kind of terminology, once we put, so they segregate the images, and from that segregation, again we have to go for the more advanced technology to understand, and then we give the timeline reconstruction. Yes, this person A has started this from the Ganganagar, comes to the Jaipur, then comes to the Delhi, from Delhi to Batinda, then they supplied the drug. So all these kind of crime scene timeline reconstruction we do, event sequence, suspect movement, victim movement, how the suspect is moving, how the victim is moving. So all these kind of things we are doing, with the proper requirement of the industry, because industry nowadays want to solve the crime. And when we talk about the forensics, they have a very high trust, very high hope, very high belief that forensic expert can do anything, which is actually we are not getting to much result, to be very frank. Reality should be known to the student at least, that saying something is altogether different, but getting a data and getting an output, we may get at that output for the one case, maybe out of 10. That one we can vouch, but we have to work more on the remaining 9, how we can get the more accurate data for that particular 9. So this is the case which we are doing at present, and which is a national, everyone talking about that case, Pune Lohagarh Fort case. We are assisting into the human identification, the person, although the chat and many things has been revealed by the media, which is partially correct, partially incorrect, because we have seen the evidences with the reality. But मीडिया में कुछ बार सोचते कहते हैं अरे यार ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये कहाँ से मीडिया अपने आप कहानियां ला रहे हैं, जैसे कि इसमें 30 पीसेस मिले श्रद्धा के, आफ्ताब ने उसके 36 पीसेस, कह रहे स्टोरी 35 की चलानी है, हाउ दे काउंटेड 35 pieces. Similarly in this cases also. So apart from that media criticism and other things, media, they just run any story on the basis of sources, but we, being a forensic expert, we cannot talk anything about the sources. So here we are helping with the help of some kind of experts from the foreign also, like the person with a mask face, we have to identify either this person is belongs from particular individual or not. So for that, I'm taking a help of Michael W. Street from the USA, the Sketchcop laboratory, the gait pattern analysis of that particular, tattoo recognitions, clothing recognitions, height estimations. So all these kind of AI integrated tools and technology we are using for that particular case, the present case, which is of the national discussion. So unknown body identification, suspect tracking, victim identification. So all these kind of things we can use artificial intelligence tools into the human identification. Why? Why these things are required? Because the crime scene, as I told earlier, it's become an invisible crime scene. And when we have the invisible crime scene where the identity has been stolen, reputation is on attack, there is a no physical crime scene, yet evidences are exist, no eyewitnesses are there, but still we have to find the evidence, because we are being an investigator, it's our responsibility, it's our duty to find it out who has done this crime scene. So when we have the hidden evidences, we have to go for the metadata analysis, we have to go for the digital footprint, time step analysis, algorithm, because data remembers everything. Even if you want to change, you can change, which looks it has been changed, but actually it is not changed into the form of data. So data remember anything, everything, because investigation has evolved. So evolution phases we have seen into the investigation. When I started my career, when we go at the police station to ask that how we can assist or how we can learn about particularly, usually they do not entertain the forensic experts.
I'm talking about the 20-year back. So earlier they work on the confession. Now the witnesses, eyewitnesses. Now the scientific evidence like DNA, we talk about the blood grouping and other things. But now whole crime scene is segregated, surrounded, or concentrated by the digital evidence. So the evolution has, you can see the investigation has evolved from confession to the digital evidence. And for that, we scientifically have to understand that this new crime scene investigation, where the evidence is more over the opinion of the individual, I think so. No, you have to produce back your thinking with the proper scientific evidence. Science cannot go over the biasness. The opinion can be biasness, can be biased. I think so. I think so is a bias. Sometimes it can be biased. But scientific evidence cannot be biased. And facts are always required to establish any scientific crime scene investigation, either the manual crime scene investigation or artificial intelligence used crime scene investigation over the assumptions that this has been happened. That's why the many cases, either we talk about the Jessica Lal or we talk about the Arushi cases where the acquittal happened, it's just because there are some kind of assumptions over the fact which has been collected by the law enforcement agencies, so which is very, very important. As digital evidences, so new kind of crime also we have, apart from the earlier the cheating happened, particularly in the मतलब if I correctly remember, आपका region जो है सीकर वगैरह, उस region में दे मावा खिला के लूट लेते थे लोगों को रास्ते में, but now the scenario has changed. So now they are more into the cyber fraud, deep fake images, cyber stalking, digital arrest, data breach, and everything is online. It's easy. It's easy. You know, you want to go from different country, from there you can use the VPN. You can commit whatever the amount you are earning is very easy earned money. You know some kind of technology, but yes, the ultimate the result is very bad for that criminal as well, as we have the punishment and as we have the very bad experience with some kind of criminal where ultimately at the end of the day they have committed the suicide as well. As per my experience, those who are committing the cyber fraud, they think that they are not going to be caught, and sometimes they're a very reputed person, and at the end they say that to police, sir, please give me 1 hours, I'll commit the suicide, but do not arrest me because I cannot live with this, such kind of uh, case against me. So new crime scene is converted into more into the mm, digital, and in digital footprints every click leaves a story, every action leaves an evidence, and we have to understand, we have to evolve ourselves, we have to make that story, how this story is true, and then we can connect these evidences with the data available for the examination. So AI is a new detective. Earlier, detective go at the crime scene to find it out where the person is moving. If I want to know that from which place Geeta has traveled and when she met to the Palak, I have to need someone who can go. But now I have a new detective, which is called the CCTV. From that CCTV, we can add that data into the CDR so we can understand the pattern from where they have been moved, how they have been moved, and then we can organize with a more authentic way by the image authentications by the CCTV footage, which I assisted into the Saif Ali Khan case, where we have got the several CCTV images, and then we enhance images and we put that images together to find it out the authentication images. So from that, if we use this as a preventive forensics, it can go more for the threat predictions as well. So three pillar of the safety is need to understand by the forensic professional: science, law, and ethics. If you have the balance with the science, law, and ethics, then you can solve any cases, because there is only two kind of crime. One is a simple crime, another is a complex crime. Simple crime is where the criminal do not use his full mind, and the complex crime where the investigator do not use his full mind. If you use the full mind with the science and having the proper chain of custody, legality,
with a proper ethics, I'm sure that you can solve any kind of crime. That is not a problem. India digital movement is required. So connected nations, we have to work together. Data-driven societies. Our DPDP Act is going to be, which is having a very correlation with the GDPR and other things. So growing need of forensic science is very, very important. Try to build your skill. Whatever the skill you can build, whatever the technology you are learning, you try to make yourself perfect in that technology, in that skill, so that later on you can give your proficiency, your expertise into that particular things. And with the conclusion of this particular talk, we have to understand the human sides of the forensic experts, where forensic experts, from forensic expert, people are looking for the justice with the dignity, truth, and the closure. Truth can reveal, case can close. So these all things everyone is discussing what forensic people call the forensic. They have the trust. We have to give the justice. We cannot give the justice ultimately. We are the one part of the delivery of the that particular judgment. But yes, from that judgment, maybe someone get the justice with the dignity, and truth can come reveal, and the case can close. So imagine a future if with your expertise, with your technology, fraud prevented early, truth verified instantly, and justice delivered faster. So any fraud which is going to commit or committed can prevent fraudly. So people, those who are from that loss, they are committing the suicide. We can save one life. Those who are suffering from the, such kind of fraudster status, if the truth can verify it instantly, they can have the good, you know, outcome from that your analysis, and justice can deliver faster because judiciary can use your expertise, your report for the more and more accurate way, and they can understand. So this is a future plan of the Indian forensic or the international forensics. We had started discussing about the AI tools in 2024. The AI technology has a lot more discussed into many cases. Now we are talking about the forensics, cyber forensic particularly, 3D imaging is future. With this all kind of technology, we have to sustainability of the implementation of the technology into the fitting ecosystem of the country, not only in India but other country as well. Global standards we need to match, because ultimately we are facing this issue into the international code, that how your country maintain the global standard, which we are lagging. And I believe that roadmap which I have got this through some kind of sources is blockchain is going to be very highly used into the 2020 2030. So with this, you have to learn these technologies so that you can understand how the blockchain work. If any fraud committed through the blockchain, how you can detect, what kind of skill you need to develop. So these are the things as future. So I once again thank you, Samir sir, and whole team, whole management for giving me opportunity to discuss. You can connect me on the social media for any kind of future coordinations. And now I'm open for all kind of questions from the students, right? So students can learn more about, or they can connect in the future as well for any kind of discussion if they want to have. So thank you, Samir sir. Thank you, Mridu ma'am. Thank you, Spra ma'am. So getting a time, next lecture you have a 3:30. So I tried to close 2 minutes early so that other speakers should not wait. I'll take the question from the from the chat box. Ansika. Ansika, can you please name some tools on of AI which student can practice and how? So particularly, Ansika, the question is very wide. Many tools are there. Which kind of analysis you want to do? So for that, if you want to do the particularly if you want to do the photograph recognitions, either this photo or genuine or not, so you can go for the using API of the forensically, or using the 229dforensics.com, such kind of tools you can use. If you want to go for the analysis of voice recognition, you can use the Anuriti AI tools. If you want to use for the facial recognition, you can go for the face matchmaking applications. So there are many tools from which you can learn, but particularly what you want to learn, if you can personally connect later on the LinkedIn, so I will give you some tool links
or we'll connect with some kind of beta program version from where you can get the access of these tools and you can learn about that. Anshika, hope I've answered your query. So taking a new question from the Sharmi, as AI is emerging day by day, so its countermeasures are with the evolving stage. So what are the benchmark that is? So particularly as per now, the Indian court doesn't have any benchmark for the admissibility of the evidences which is submitted by the AI. Recently, I think 2 days back, Rajasthan High Court even given the judgment that whatever the analysis you are doing by the advanced technology, and if there is expenditure more, so the complainant should bear the expenditure because police cannot afford all these kind of advanced tools. So this is a judgment came from the Rajasthan High Court 2 days back, I think 7th of July. So as far as there is no benchmarking, Sarmi, for the Indian court system because Indian court system is still not much aware about the AI tools which is embedded into our traditional tools because what is AI? They are going to integrate into the existing system. You have the database, like this Google Meet. If you talk about this Google Meet in 2020, when we started in the COVID time, meeting each other, they do not have the transcription. Now, just turn on, you will get the transcription of all the meeting. So it is just an integrated one API into this Google Meet. If you want to do more kind of enhancement, you can buy the more AI tools, integrate into this Google Meet, and you will get the more kind of services. So it's all about technology evolvement. There is no benchmark. The first part of your question, yes, I agree that we are emerging day by day because technology is evolving and technology cannot stop. When I started using mobile phone, my first phone was Nokia 5100. वो ईंट की साइज का फोन था, अगर मार दो तो सिर फट जाएगा. But now we are having a तब 24 रुपए का इनकमिंग कॉल लगता था, 36 रुपीज का आउटगोइंग था. That is my first number. Same है, same numbers I'm using since 1999. So from that day we do not expect that कि something we can see. We just heard that. जैसे अभी हम सुनते हैं ना कि उड़ने वाली कार आएगी, पिछले 10 सालों से कुछ कंट्री में कार उड़ रही है. वैसे ही हमने सुना था कि जब फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर आई वाज इन द विलेज, आई वाज इन क्लास 9th, आई हर्ड दैट वी कैन टॉक समथिंग विदाउट वायर. एक फोन आएगा एंड समटाइम आई सॉ वन ऑफ द रिलेटिव केम विद अ पेजर एंड ही जस्ट रीड द मैसेजेस. सो टेलीग्राम. अब नाउ every 2-year-old child can do the दादू से मुझे कॉल करना है, वीडियो कॉल. हम इमेजिन भी नहीं किए थे. तो आई कंप्लीटली एग्री विद यू दैट technology emerging is so fast, and that's why the traditional investigation is need to be improved, because ultimately at the present the traditional investigation with the not with the cyber born people, it is the cyber migrant people. We are the cyber migrant, we are learning the cyber or digital tools. So there is no benchmark as of now. I'm sure that Sarmi, I have answered your question. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. So getting a conscious questions, there are any laws regarding admissibility of AI generated analysis we are currently. So same, the our IT Act is only governing whatever the technology you are using, and we are integrating. Even the court is nowadays has been integrated. And if you go through the conscience of judgment, recently Deloitte has been fined for around 47 crore rupees for using the non-performance AI tools. Court into the Abu Dhabi, they have fined the law firm for citing a judgment which is not existing. They have fined around 38 lakh rupees fine. So there is nothing, no particular law. Ultimately, in the court, how the court work on the admissibility. If the court make this your report is admissible, then later on they will discuss either your report is authentic or not, where they call for the forensic experts, either the analysis which is done by the artificial intelligence integrated tools, they are authentic or not. So authenticity comes onto the later stage. So that is a very, very important. But as of now, there is no particular section. If you want to ask Kanchan that which sections govern with the AI, so there is no particular section for that. Kanchan, hope I have answered your query.
So what ethical concerns are raised with the AI use? Yeah, ethical concern means sometimes we give the prompt wrongly. Like as I told you that, let me show you if I can get that both the images. Let me show you which agency has given the wrong prediction, and from that wrong predictions they have got something different view. So that different view is altogether not matching with the actual data, while the in the wall and the loop pattern they are having a same kind of pattern. So let me come to the conclusion. Okay, I have to log into my WhatsApp, so just give me one more minute. In the meantime, I can take the next question when I'm getting the images. So I think this is the last question I have. What are the challenges using the AI biometric system in the forensic investigation? It depends upon which kind of tools you are using, Vaishnavi, because we in India we are just having a threat, and from that particular threat we want to solve the crime. कि आप CCTV की नजर में है, एक्चुअली वो सीसीटीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. So same biometric systems, either they are very good into the recording, because you have heard about the case of the Kanpur, that particular वो जो ट्विन ब्रदर है उनका बायोमेट्रिक मैच हो रहा है कि उनका आधार नहीं मैच हो रहा. So that आधार technology is not up to mark. It doesn't mean they do not have. We are collecting all the biometric features for that particular twin, ताकि हम उसमें कुछ साइंटिफिकली जो है हम उसको इस्टेब्लिश कर पाए कि ये जेन्युइन है या नहीं है. और usually in a prima facie we are not able to get any such kind of things, right? So I think I'm able to get that image. And which is done by a police officer which is who is not an expert, but उसने अपना AI का यूज किया और बोला कि मैं जो है आपको एनालिसिस करके देता हूँ, और उसने अपने हायर मैनेजमेंट को दे भी दिया कि ये दोनों फिंगरप्रिंट अलग अलग है, और दोनों इमेज उसने बड़े कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट भी किया. आई जस्ट वांट टू शो यू इफ आई कैन. My screen is visible? Yes, sir. Yes. Both print are visible, or only one print is visible? Both. So only one, sir. Oh, only one. Okay, so let me share again. Okay, let me do the screenshot. It will be easy for you to understand. Sorry, I think Ashish ka session hai na. I'm so sorry. So just I just want to ये explain करने का main वो था कि is it visible? So Yes. you can check. This is an image which is not blue. Both the images they have just enhanced by the some kind of tools. I'm sure that ChatGPT से ज़्यादा उन्होंने नहीं कुछ यूज किया होगा, but you can see कि वो कह रहे हैं कि दोनों चीज पैटर्न ही अलग है, एक तो वॉल है एक लूप है. What the senior people, the faculty member, what we can do in this scenario? It is very difficult. It is very difficult to convince any higher officer. नहीं आप ही तो पढ़ाते हो ना कि वॉल के कंसेंट्रिक रिंग होती है, लूप में रिकर्विंग रिंग होती है, तो इसमें है तो दोनों, बट वो एनहांस किया है विद अ नॉन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी. So उस चीज को we have to be very careful about whenever we are using such kind of things. So this is the one live example. I'm just doing this investigation for the एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया उन्होंने कि उसने एग्जाम ही नहीं दिया. Hello? उसको टर्मिनेट कर दिया है. So because proper अगर दोनों एक वॉल पैटर्न है एक लूप है, तो how the 8 edge characteristics are matching on the upper part and the apex ridges. So you can understand कि हम लोग
डाल देते हैं ना चैट जीपीटी में सब कुछ, एंड एआई को बना कौन रहा है? एआई तो हम ही बना रहे हैं ना। वी आर मेकिंग देम स्ट्रेंथ एंड वी आर गिविंग देम प्रॉम्प्ट, वी आर गिविंग देम टेक्नोलॉजी। वो तो डे बाय डे लर्न कर रहा है चीज़ों को। So I think I have taken all the question. Thank you once again, Samir sir, and all the member here. I'm sure that जो भी आपके अगर क्वेश्चन रह गए होंगे, बिकॉज आशीष सर का क्वेश्चन भी सेशन है। So thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, sir, for such an insightful and informative session. Your valuable thoughts, practical experiences, and expert guidance have certainly broadened our understanding of forensic science. We truly appreciate the time and efforts you have devoted to sharing your knowledge with us. It was honored to have you with us today. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you Thank you, so sir. much, sir. It was a wonderful session. Thank you for joining with us. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now, we would like we would like to welcome our next speaker, Mr. Ashish Kuntal. Mr. Ashish Kuntal is the founder and CEO and senior cyber forensic analyst at Hawkeye Forensic. With over 8 years of experience in cyber forensics and digital investigations, he holds a BSc honors in forensic science from Amity University, Noida, and a postgraduate diploma in forensic science from the University of Strathclyde, Glasgow, UK. His areas of expertise include mobile, computer, email, and media forensics, spyware and malware analysis, deleted data recovery, and forensic interpretation of digital evidence. He is certified as CHFI, CEI, ACE, ACI, CMO, OSFPC, and CIRAF, and has completed coursework in the Chief Information Security Officer program. Mr. Kuntal has examined over 4,000 digital devices, trained 5,000 plus students and professionals across 30 plus institutions and law enforcement agencies, collaborated with Indian police in cyber crime investigations, and served as an expert witness in administrative and court proceedings. He is also a visiting faculty member, board of studies member, and a regular speaker at national and international conferences on cyber forensics and digital investigation. Thank you so much, sir, for joining with us today. Over to you, sir. Uh, Thank you, everyone. Thank you, Dr. Spriha, Mridu ma'am, Samir sir. Had a wonderful session with Dr. Ranji sir. I was also a listener, sir, and it was always a pleasure listening to you. And I Thank you, just sir. want to remind you all this. Like there was a time when I was also an intern, and now. Sharing a stage, it feels good, right? And always at the time when you're starting a company, when you are stepping in forensic, he was with us all the time. So we anyway at the time we can call him sir, इस तरीके की चीजें पहले बहुत सारी चीजें नहीं आती थी. So it was always a great learning, and I must say कि he is one of the person for बहुत सारे investigators of market में पहले तो बड़े कम थे, but अब बहुत सारी कंपनीज हैं, लैब्स हैं, कोई स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है, कोई नहीं मेंटेन करना, बट सबने बहुत कुछ सीखा है. एंड मेरे ख्याल से एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन साइड्स में फोरेंसिक के अंदर में डॉक्टर रंजीत का बहुत बड़ा हाथ है. एंड उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ करी है, एंड वी मस्ट अप्रिशिएट दिस. थैंक यू सो मच सर. हैड अ वंडरफुल. बहुत सारा पार्ट आपने मेरा कवर किया, मेरा काम आपने हल्का कर दिया. नहीं, So, थैंक यू सो मच. थैंक यू आशीष. मतलब हमें अच्छा लगता है ना कि अपने साथ का कोई कलीग इतना अच्छा काम कर रहा है. सो इट्स ऑलवेज प्लेजर, एंड हमें भी अपने जो सीनियर्स हैं उनसे ब्लेसिंग मिलती है, तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे साथ के लोग जो इथिकल तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं. सो इसीलिए व्हेनेवर आई मीट आशीष, हम लोग किसी चीज़ की वो नहीं करते, साइंटिफिक डेवलपमेंट कैसे होना चाहिए, दैट ओनली वी डिस्कस. राइट. सो थैंक यू सर. Once again, मेरा सेशन एक बड़ा I will try to limit my session based on to the artificial intelligence and digital forensic, how they are improving, how they are helping criminal investigations.
So in criminal investigation, I would be much more, because it would be a broader perspective. I would be talking more about digital evidences only, and yeah, digital forensic, or you can say the different domains of digital forensic. So for as most of the students bachelors hai, masters hai, so everybody knows AI, right? हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है. It's everyone, like मैं भी अभी स्टेटस भी डाल रहा हूँ तो भी AI से डाल रहा हूँ. कौन इतना बड़ा टाइप करेगा? उसको नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट दिया, राइट मी लिंक्डइन स्टेटस, राइट मी व्हाट्सएप स्टेटस, अच्छी तरीके से चीज़ है. अब हमने नई चीज़ कर दी यार, किसी को पता ना चल जाए तो ना स्टेटस लंबा सा आएगा, तो कैपिटल में हैशटैग्स आएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये चैट जीपीटी या एआई जनरेटेड है. तो हम बड़े स्मार्ट, उसमें ह्यूमन डाल दिया हमने थोड़ा सा, कि मेक ऑल द हैशटैग स्मॉल सो दैट इनको सबको लगे कि मैंने खुद लिखा है. सो वी कैन मेक, अगेन एक तो दे दिया कि इतना बड़ा प्रॉम्प्ट नहीं, मुझे एक ऐसे नहीं लिखना है स्टेटस के ऊपर, मेक इट मोर प्रिसाइज, ऐसा लगना चाहिए मैंने खुद लिखा है. सो आई सी मोस्ट ऑफ द स्टेटस, मोस्ट ऑफ मतलब सब कुछ अपने मन की बात, जो स्पेलिंग मिस्टेक वाली सारी चीजें हट गई, अब सब प्रोफेशनल बन गए. इवन ए स्टूडेंट, यू कैन नॉट कंपेयर अ स्टूडेंट, एक बैचलर का स्टूडेंट है और एक पीएचडी होल्डर है जिसने पोस्ट डॉक वगैरह सारी चीज कर ली, एंड ही इज आल्सो एक्सपर्ट. सिमिलरली दिस इज गोइंग अराउंड द फोरेंसिक एक्सपर्ट्स दीज डेज. एंड जो क्रिमिनल्स हैं, मैं क्रिमिनल्स नहीं कहूँगा, मतलब जो हमारे पास क्लाइंट भी आते हैं बहुत सारे, तो हमें तो ये नहीं पता रहता क्रिमिनल कौन है, असली कौन है. जो आया है वो क्लाइंट है, उसका काम करना है, पैसा देना है. तो मेरा इस टॉपिक को लेके ये है कि वो बंदा भी इतना ही स्मार्ट है, मतलब वो भी मेरे बराबर का एक्सपर्ट है, कि व्हेनेवर दे कम्स टू अस, वो पहले अपनी एआई से सारी चीज करके आ जाते हैं. सो मैं अभी मतलब बिफोर वी स्टार्ट, इट्स अ नॉर्मल कोई प्लान सेशन नहीं है, इट्स अ रैंडम रियल लिस्टिक स्टोरीज है. अभी मेरे पास एक केस है, एंड रिसेंटली आज मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी थी, एंड जो बंदा हमारा काम कर रहा था उसके ऊपर वो आया नहीं. एंड आई एम वेरी बैड एट राइटिंग रिपोर्ट्स, और वो सारी चीज आई कैन डिक्टेट देम, ऑर्डर दे, बॉस की तरह ऑर्डर दे दिया, बड़ी अच्छी तरीके से लिख जाएगी रिपोर्ट, चेक कर लिया और दे दिया. सो नाउ द केस इज, देयर इज अ गाय, बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत पढ़ा लिखा बंदा है, आईआईटी से उसने एजुकेशन है, आईआईएम से भी कुछ किया हुआ है, बहुत बड़ी प्रोफाइल दिखा दी उसने. जब हमारे पास आया तो एक नॉर्मल आम आदमी, सर आप बहुत एक्सपर्ट हो, हमने बहुत पढ़ा है और मेरे पे एक डिजिटल एविडेंस है, आपसे बात करनी है. सो हुआ क्या इस केस में कि अब उसको कहीं से एक लिंक मिल जाता है किसी पॉर्न साइट का, जिसके ऊपर उसकी एक वीडियो पड़ी होती है, और वो किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट से, XYZ फोरेंसिक एक्सपर्ट से उसने एग्जामिन किया होता है. तो उस एक्सपर्ट ने उसे इनक्रिप्टेड, उसने बोला कि मैं पैसे लूंगा, इसको एग्जामिन करूंगा. उसने अपनी वाइफ की फोटो भेजी और बोलता है कि मेरे को सस्पिशन है, दिस इज माय वाइफ, और मेरा एक बच्चा है, मैं बड़ा समझदार प्रोफेशनल आदमी हूँ, आप उसे एग्जामिन करो. तो हमने कहा ठीक है, एग्जामिन करते हैं. कह रहा सर ये कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, एडमिसिबिलिटी का पंगा है. जनरली होता क्या है, अंडर सेक्शन 63(4) हम एविडेंसेस को जनरली निकालते हैं. कुछ ऐसे ओरिजिनल हमें निकालना पड़ता है कि दिस वाज द ओरिजिनल ऑफ दिस वीडियो, दिस इज हाउ रिकॉर्डेड, नेचुरल एक्टिविटी जैसे फोन की यूज करते हुए टाइम पे रिकॉर्ड हुआ है, ये इसकी हैश वैल्यूज है और ये सारी चीजें. हमने उन्हें कहा सर आपका तो वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, तो कह रहा मैंने कहा सर इनको पेन ड्राइव में डाउनलोड करके दे दो, हम एक नॉर्मल एजम्पशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट बना के दे देते. उन्होंने कहा ठीक है आप कर दो. तो उससे जब दिया उसने, हमने पैसे ले लिए कि भाई काम कर रहे हैं तो पैसे लेंगे. सो आफ्टर एनालाइजिंग लॉट ऑफ फोटोज वीडियोज जो भी उसने दी, तो वी कम टू द कंक्लूजन कि भाई ये जो लड़की इसके अंदर में है, और ये जो आप बता रहे हो कि सो कॉल्ड वाइफ जिसे वीडियो में बता रहे हो, और ये वो नहीं है. सो वी थॉट लाइक इट वुड बी, मतलब पहले बहुत ये होता है कि बंदा पैसे खर्च कर रहा है, वुड बी सस्पिशन, बट क्रिटिकली एग्जामिन बाय मल्टीपल डिफरेंट फैक्टर्स और काफी दिन लगा के वी कम टू द कंक्लूजन कि दिस इज नॉट हर. नाउ द गाय इज ही इज ओवर कॉन्फिडेंस. तो वो एक्चुअली सुनना चाहता है कि यस, एंड अगर वो ना बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्सपर्ट नहीं हो. एंड मार्केट में ऐसे बंदे जिन्होंने बोल दिया हाँ, मार्केट में हाँ, जिन बंदों ने बोला उससे कुछ पैसे लिए, उन्होंने उसे इनक्रिप्टेड एक रिपोर्ट भेज दी, बोल दिया बाकी का इसमें एडिशनल मेरा खर्चा हो गया, इसके पैसे और भेजो तब जाके ये डिक्रिप्ट होगी. चलो वो उसका सस्पिशन आ गया, हमने उसे रिपोर्ट दे दी, एंड इट्स फाइन देयर इनफ. बंदे ने उस लड़की का सारा एआई से फोटो वोटो सब कंपैरिजन रिपोर्ट बना दिया, एंड एआई से कहता है कि ये उसी की वाइफ है, वेयर द वीडियो इज डिग्रेडेड, सारी चीजें.
एंड इट्स ब्यूटीफुली क्राफ्टेड, इतनी अच्छी तरीके से लगा कि जैसे कोई यूके यूएस का कोई एक्सपर्ट ने कोई रिपोर्ट बना के दी. But still the document itself जो download हुआ, that document was saying the metadata of that document which was reported and which you sent it, वो भी पूरा AI generated था. We know the images which is this, उसने कॉर्निया बना दिया, in detail बना दी, जिस वीडियो में कुछ दिख नहीं रहा, आंखें बना दी, सारी चीज कर दी, एंड उसने एआई को बोला जो सारी कंडीशंस बताई और उसके हिसाब से वो रिपोर्ट सही होगी. तो ही डोंट रिक्वायर ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन हियर. वो अपना एक मन बना के बैठ गया है कि मेरी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन हो चुकी है, एंड द एक्सपर्ट हु इज देयर, हु इज यूजिंग ह्यूमन एंड द इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ही इज नो मोर एन एक्सपर्ट. सो ये हमारा कंक्लूजन था, बट हमारा कंक्लूजन फर्म रहा, एंड वी सेड कि व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू कैन गो अहेड एंड आप फाइल करें, कुछ भी करें. आप लीगल मांगे, हम लीगल देते, तो उसने लीगल रिपोर्ट के लिए कर दी, हमने लीगल रिपोर्ट उसे बना के दे दी. मेरा ये बताने का रीजन ये है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट केस, वी कीप्स ऑन गेटिंग दीज काइंड ऑफ केसेस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में बहुत बड़ा है. डेफिनेशन की बात करें तो इट्स अ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर्स के थ्रू यूज होती है. बाकी जो भी हम इनपुट्स दे रहे हैं, सारे इनपुट्स हमारे पास निकल के वहाँ पे एक जंक ऑफ डेटा है, उसमें से वो कुछ भी उठाता है, वो निकाल देता है. यू कैन मॉड्यूलेट, किसी भी तरीके से नाम से आप चेंज कर सकते हैं. आप जैसे मन चाहे उसे अपना फ्रेंड, दोस्त, कुछ भी बना सकते हैं. जो मन चाहे, जिस भी तरीके की आप बात करोगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ वो आपके फेवरेबल चीजें देगा. एआई का मतलब वो आपको सपोर्ट करे कुछ चीजों में, बट एआई का ये भी मतलब है कि वो न्यूट्रल भी हैं. बहुत अच्छे अच्छे एआई सर्च इंजन हैं हेल्पिंग इन्वेस्टिगेटर्स इनटू फॉरेंसिक फील्ड. इंग्लिश बहुत अच्छी लिख लेता है. तो एक आप लिखेंगे कोर्ट यूजों को, कोर्ट रिपोर्ट जब बनती है, कोर्ट रूट रिपोर्ट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, टू द पॉइंट होनी चाहिए. वो सारी चीजें वो कर देता है, बट उसके अंदर में इतना दिमाग नहीं है कि वो जो फीलिंग्स हैं, जो उसकी एनालिसिस है, उनको कॉम्बिनेशंस हैं. कभी कोई सिग्नेचर, जैसे कभी जिंदगी में सर एग्री करेंगे कि अगर एक बंदा हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार कोई सिग्नेचर करे कि ही कैन नॉट राइट द सेम सिग्नेचर्स. ऐसे ही कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जिसके अंदर में सेम सारी चीजें रहें, सिवाय वर्ड्स के. वर्ड्स जो हम यूज करते हैं एक डिक्शनरी के अंदर में, मल्टीपल टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, वो हर एक पैराग्राफ और रिपोर्ट्स वगैरह कुछ भी आप माने उसके अंदर में वो जाते रहते हैं. तो एआई उन वर्ड्स को निकाल के एक कॉम्बिनेशन और वो सारी चीज बनाता है, ये सबको पता है. फोरेंसिक के अंदर में इसके दो चीज पहलू हैं जिसके हम बात करेंगे. इट्स अ मशीन लर्निंग, जिसको हम बताते हैं डीप लर्निंग. जनरेटिव एआई है, टेक्स्ट वगैरह को अपने आप रीड करता है, निकाल के देता है. ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है. अब हम आते हैं एक डिजिटल फोरेंसिक की तरफ, की मल्टीपल मॉडल्स हैं, आप उसे ट्रेन कर सकते हो अपने खुद के मॉडल को, अपने हिसाब से. आप फोरेंसिक एक्सपर्ट है तो फोरेंसिक एक्सपर्ट के हिसाब से आप ट्रेन कर सकते हो. नाउ व्हाटएवर आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स हैविंग अ बोथ साइड्स, गुड साइड और बैड साइड. दिस कैन बी, अगर यहाँ पे कोई हमारे में से बंदा कोई क्रिमिनल इंटेंट का है और ही वांट टू गो अहेड एंड यूटिलाइजिंग एआई, तो वो उसके लिए जा सकता है. फोरेंसिकली हम इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो हमारे हिसाब से भी जा सकता है. इट डिपेंड्स लाइक हाउ ह्यूमनली साइंटिफिकली ट्रेंड यू आर. अगर आप इंटेलिजेंट है तो आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं. प्रॉम्प्ट लिखने की चीजें आपके ऊपर है, वो कितना अच्छा लिखेंगे. आप जितना यूज करोगे, उसमें जितनी अच्छी कमांड दोगे. लोग प्रॉम्प्टों की प्रैक्टिस करते हैं टू एआई को यूज करने के लिए. सो यहाँ प्रॉम्प्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. जैसे कमांड, जितनी अच्छी कमांड दोगे उतना अच्छा रिजल्ट वो देगा. बाकी अगर नॉर्मल फॉर्मली आपने मांगा तो फॉर्मली आपको दे देगा. The same thing happens with the other side, the bad side. The people also criminals or investigate criminals and investigators, they both can use the AI. हमारे पास एज ए डिजिटल फोरेंसिक पर्सपेक्टिव इसके दो पहलू हैं. इट्स मेकिंग डिफिकल्ट मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस. बहुत प्रॉब्लमैटिक कर रहा है चीजों को. सर ने लॉ की बात बताई. इंडिया का लॉ, आई मस्ट से इट्स नॉट अपडेटेड. अपडेट कब होगा? 10 साल 20 साल बाद. 63(4)C का सर्टिफिकेट आया, 65B का रिप्लेसमेंट हो गया, अंडर सेक्शन 45 का रिप्लेसमेंट हो गया. फिर हमारे पास हमारे लॉज, हमारे साइंटिफिक लिटरेसी, हमारे जजेस की पुअर है, कुछ नहीं पता. वो डिपेंड करता है दूसरे एक्सपर्ट के ऊपर. साइंटिफिक लिटरेसी हमारे लॉयर्स की, वो रिलाय करते हैं फोरेंसिक एक्सपर्ट्स पे. सो कॉल्ड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कह लो. हमें ये नहीं पता कि हु सर्टिफाइड एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट.
एवरीबडी इज रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 39 BSA. पुलिस वालों को कुछ नहीं पता, कोई कहता है कि रिपोर्ट्स आपकी काम की नहीं है, प्राइवेट एक्सपर्ट्स की, कोई कहता है काम की है, एक कोर्ट रिपोर्ट जजमेंट दे देता है उसी की रिपोर्ट के बेसिस पे. तो हमारा जो लॉ सिस्टम है वो डिफरेंट है. अभी आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द पर्सन हु इज इन्वॉल्व इनटू द लॉ रिफॉर्म्स. उससे उससे हमारी बात पता चलती है तो बंदा कहता है कि लॉ रिफॉर्म हुए हैं, उसके अंदर में हमने अपडेट किया सारी चीजों को, तो दे आर फ्लॉज इन 63(4C) सर्टिफिकेट. सो नाउ मैं थोड़ा सा 63(4C) को लाइन पे लूंगा. सो व्हाट 63(4C) अंडर सेक्शन 63(4C) इन विच लाइक all the electronic evidences, howsoever it is created, if they are going into the courtroom as a evidence, they need to be certified by the individual expert or by certified by the somebody who's literate into that field of area. तो दो सर्टिफिकेट्स, अगर मानो मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है, मेरे को किसी ने थप्पड़ मारा है, बंदूक दिखाई है, मैं उसका एविडेंस दिखाना चाहता हूँ रिकॉर्डिंग को कोर्ट में, सो आप पेन ड्राइव में डाल के दोगे और कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा. Court will accept that with a 63(4C). You can write down this, and this is very much important. You people can read it related to this subject. Earlier, this was known as Section 65B, Indian Evidence Act, and now it is 63(4C). पार्ट ए एंड पार्ट बी, दो पार्ट होते हैं सर्टिफिकेट के अंदर में. पार्ट ए के अंदर में जो ओनर होता है डिवाइस का, फॉर एग्जांपल मेरे फोन से वीडियो बनी है तो इस फोन का ओनर मैं हूं, तो पार्ट ए में बना के दूंगा कि मेरे हिसाब से सारी चीज सही है, जेन्युइन है, मेरा फोन है, नंबर ये है, नाम ये है. सो एक फॉर्मेट है उसका. दूसरा सर्टिफिकेट होता है पार्ट बी, एक्सपर्ट सर्टिफिकेट. उसके अंदर में आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड जो भी कहाँ से निकला, कौन सा इसका सोर्स था, किस फाइल फॉर्मेट में है ये, और इसका एक्चुअल एड्रेस कहाँ है, तो उसको आप पेन ड्राइव में निकाल के सर्टिफाइड करते हो कि इस ड्यूरेशन के अंदर में मेरा कोई भी मेरे मैनिपुलेशन चेंजेस नहीं हुए, और हमने उसे निकाल के एक पेन ड्राइव के अंदर में डाल दिया. इसकी इंटीग्रिटी मेंटेन्ड है, प्रॉपर तरीके से हमने काम किया. नाउ द कोर्ट कैन एक्सेप्ट इट. कोर्ट में हमने ये भी देखा है कि एक लॉयर ने लिख दिया 65B, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिख दो 63(4C) सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट बन गया. दे जस्ट आस्क 63(4C) सर्टिफिकेट है, हैश वैल्यू कैलकुलेटेड है. So no matter the evidence is where the evidence is coming from, it is directly going into the courtroom, and other person जिसको नॉलेज ही नहीं है, वो उसे क्रॉस कर ही नहीं पा रहा. जिसने सांप नहीं देखा, रस्सी नहीं देखी, उसको कुछ भी कह दो, सांप को रस्सी, रस्सी को सांप, उनके पास मानने का कोई तरीका नहीं है. एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट है. नो डेफिनेशन ऑफ एक्सपर्ट इन इंडिया, नो प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया. सो इसका मिसयूज और चीजें अलग रही. अभी एक और रिसेंट केस है, आई वुड लाइक टू, आई डोंट वांट टू कमेंट द नेम. किसी फोरेंसिक एक्सपर्ट ने भगवंत मान वाले केस के अंदर में एक रिपोर्ट बना के दे दी, और उसके कॉल्स भी आए, सारी चीज करी. जब उसको लगा कोई एक्सपर्ट नहीं है, हमारे पास भी कॉल्स आए, तो जब उन्होंने बोला एक्सपर्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा एआई से छापो, अपने आप रिपोर्ट बना के सबकी. एआई ने बहुत हेल्प कर दी, काम हो गया. So if you see the content of the, you can clearly justify the content of AI. There's no human intelligence. जो उसने बोला वो सारी चीज करके दे दी. So that is a different story altogether. Now coming back to this, like दो पहलू हम थोड़ा सा इसके बारे में दोबारा बात करेंगे. There are a lot of challenges and helpful. हमारे पास कुछ points भी है जिसकी basis पे it is now integrated in multiple softwares which are used in forensic sciences. Now, as we are related to the digital evidences, so digital evidence is a scientific process of identifying, collecting, preserving, examining, and analyzing the digital evidences for legal proceedings. जो हमने ढूंढा अपने मोबाइल फोनों से, लैपटॉप से, या अपने किसी भी कंप्यूटर, कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक चीज जिसके अंदर में स्टोरेज है और वो स्टोर करती है, उसको हम डिजिटल एविडेंस कह सकते हैं. सो डिजिटल एविडेंस की एक डेफिनेशन फिजिकल एविडेंस एंड डिजिटल एविडेंस में थोड़ा सा डिफर हो जाता है. कि मोबाइल को डिजिटल एविडेंस आप नहीं कहोगे, आपके मोबाइल के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन फेडेड है उसको आप डिजिटल एविडेंस कहोगे. तो कई बार हम क्या कहते थे, सर मुझे डिजिटल एविडेंस मिला है, क्या मिला है? मोबाइल फोन इज अ फिजिकल एविडेंस, यू कैन कैटेगराइज, और यू कैन से इट ए स्टोरेज मीडिया, बट एविडेंस इज एक्चुअली द रिटन इन्फॉर्मेशन इनटू दैट डिवाइस. सो कई लोग इसे करेक्ट फॉर्म में नहीं करते. So digital forensic it ensure the integrity of evidences. So throughout the process आपका जो एविडेंस है वो सिक्योर रहा है, एंड आपने कोर्ट तक या जो भी एग्जामिनेशन करी है वहां तक प्रॉपर तरीके से चीजें कंप्लीट हो गई है.
I would name for a few examples of digital evidences is your smartphones, your smart TVs, your laptops, your hard drives, your SSDs, cloud storage, emails, IoT devices, GPS, satellites, आपकी vehicles nowadays, your vehicles are also a digital evidences. कहीं आपको device नहीं मिलता, vehicle forensic is a new in term. Drones आपके हो गए, आपकी smart watches हो गई, Alexa हो गया, आप whatever you using, it is having any information. Sometime printers, आपके routers, logs, सारी चीजें आपके अंदर में से डिजिटल एविडेंस कुछ ना कुछ देती है. इट डिपेंड्स ऑन टू द केस टू केस बेसिस कि what exactly the digital evidence we need to count as an. Briefly, it is nearly every digital device which is having a storage is a digital store digital evidences. Uh, जो हमारे इस चीज से रिलेटेड यूज होते हैं. नाउ एक केस स्टडी के एग्जांपल में अब हम बात करते हैं कि व्हाट एआई इंटीग्रेटेड, ये तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस हो गया. सॉरी, ये तो हमारे कुछ डिवाइसेस हो गए. इसके अलावा हमारा एक प्रोसेस है जिसके अंदर में हम सबसे पहले कोशिश करते हैं प्रिजर्व करें डिजिटल एविडेंसेस को, कलेक्ट करें प्रॉपर तरीके से, उसे फिर इंटरप्रीट करें, उसको एनालाइज करने के बाद इंटरप्रिटेशन के बाद एक रिपोर्ट लगा के कोर्ट में दे दें. सो इस प्रोसेस के अंदर में हमने पूरी सारी चीज कर ली, जिसके अंदर में राइट ब्लॉकर लगा लिया. नाउ राइट ब्लॉकर लगाया, लोगों को ये नहीं पता कि राइट ब्लॉकर लगाना था या इमेजर फोरेंसिक हार्डवेयर इमेजर लगाना था. तो उसने कहा कि ये तो एक्सट्रैक्ट, जो भी डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है वो नॉर्मल राइट प्रोटेक्टेड वे में हुआ है. बट नाउ द टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है. सो जो इमेजेस भी बन रही हैं आफ्टर इवन द राइट प्रोटेक्शन, उसके अंदर में भी एंट्रीज हो रही हैं आज की डेट में. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने राइट प्रोटेक्शन लगाया है एज पर द लॉ और एज पर द फोरेंसिक इंडस्ट्री, तो मेरे कोई भी आर्टिफैक्ट्स मेरी एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर में आफ्टर एनालाइजिंग एनी इमेज नहीं आने चाहिए. बट दिस इज अ क्वेश्चन कि वो आ रहे हैं आज की डेट में. जो भी आप डिवाइसेस को, आप राइट प्रोटेक्टेड डिवाइसेस को भी, मोस्ट ऑफ एसएसडी विच वी आर यूजिंग, अगर आप उनको राइट प्रोटेक्शन के बाद भी क्रिएट कर रहे हो इमेज करके, अगर आपने ढंग से डिजिटल एविडेंस को एग्जामिन किया है, तो यू विल सी आज की डेट में जिस दिन आप उसे एग्जामिन कर रहे हो उस दिन के भी आर्टिफैक्ट्स आएंगे. नाउ आर्टिफैक्ट्स आएंगे, हाउ यू कैन क्लेम दैट. अगर कोई अच्छा एक्सपर्ट सामने से आ जाता है और उसको बोलोगे कि भाई ये आर्टिफैक्ट्स क्यों आ रहे हैं, तो वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि यू कैन नॉट आंसर दैट प्रॉपर्ली, राइट. तो ये हमारा एक प्रोसेस है जिसके अंदर में बहुत सारी चीज हमारी फिक्स है. सो नाउ वी आर गोइंग एंड गवर्न्ड बाय द यूएस लॉ. वी आर फॉलोइंग द यूएस लॉ इन स्पेसिफिकली इन डिजिटल एविडेंसेस. सो अगर यूएस में चेंज होता है, निस्ट की गाइडलाइंस है, निस्ट स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी, निस्ट कुछ गाइडलाइंस चेंज करता है या इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोई गाइडलाइन चेंज करती है, तो हमारी गाइडलाइंस चेंज हो जाती है. इसमें हमारा इनपुट कुछ नहीं है. वी आर जस्ट फॉलोइंग समबडीज लॉ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंग्लिश लॉ चेंज कर रहे हैं, यूके ने अपना लॉ चेंज कर दिया, सारी चीजें चेंज कर दी, बट स्टिल वी आर स्टिक्टिंग ऑन टू दिस. उसके अंदर में चाहे वो एआई आ जाए या सारी चीज आ जाए, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग एआई टू चेंज द लॉ. सो वी कैन आस्क एआई टू चेंज द लॉ. फॉर्मेशन रिफॉर्म्स हम बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं. बट anyways, that is a different part of the question. So now I just want to comment on some sort of this AI when we talk about in digital forensic cases के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि इन डिजिटल डिवाइसेस की जिनकी हमने बात की, इनके अंदर में किस तरीके के केसेस बनते हैं. आई जस्ट वांट टू नेम अ फ्यू ऑफ द केसेस. किसी ने वीडियो बनाई, उसको एविडेंस के तौर पे कोर्ट में देना है, दैट इज ए डिजिटल एविडेंसेस. किसी ने सीडीआर करी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में, आपने देखा हो सिया वाला केस जो अभी सर ने बताया, उस केस के अंदर में सेकंड मोबाइल पकड़ा गया, दूसरा फर्स्ट मोबाइल भी पकड़ा गया. अब ये मान के चलिए कि एवरीबडी, कोई भी आप लोगों में से एक बंदा भी नहीं होगा जिसके पास मोबाइल ना हो. मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टूडेंट, उसके पास लैपटॉप भी होगा. हर बंदे के पास अपना डेटा सिक्योर करने के लिए हार्ड ड्राइव भी होगी. हर बंदे के पास अपना इजी टू यूज करने के लिए पेन ड्राइव भी होगी. क्लाउड भी होगा. सो जिनके भी जीमेल्स हैं उनके पास क्लाउड भी है. इतने सारे अकाउंट्स हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, तो यू कीप्स ऑन हैविंग योर डेटा बैक्ड अप. नाउ आप अपना पासवर्ड चेक करना चाहते हैं कि मेरा पासवर्ड लीक नहीं है, तो एआई को कमांड दो, वो आपका चेक कर देगा. सो एआई इज एक्चुअली यूटिलाइजिंग द डेटा विच इज अवेलेबल ऑन टू द पब्लिक नेटवर्क, एंड उसके हिसाब से वो काम करके आपने देने की कोशिश. इफ यू डोंट हैव एनी आइडेंटिटी रिलेटेड टू योर नेम ऑन टू द पब्लिक नेटवर्क, इट इज नॉट एबल टू गिव यू डेटा. अभी नई चीज आई है जिसे हम कहते हैं नेट ग्रिड. सो हमारी इन्वेस्टिगेशन, जो लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर में नेट ग्रिड को दिया गया है,
वो क्या करता है, उसके अंदर में एआई इंप्लीमेंट कर दिया, उसके अंदर में जो भी पब्लिक डेटा आपकी ट्रेन टिकट्स या गवर्नमेंट का कुछ भी आपने पोर्टल यूज किया, आधार जहाँ पे भी लगाया है, या कोई भी चीज जहाँ पे आपने नाम यूज किया है गवर्नमेंट की साइट्स पे, वहाँ का डेटा ए लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर हु इज हैविंग द नेट ग्रिड एक्सेस, तो वो सारा का सारा आपका देख सकता है विद हेल्प ऑफ एआई। वो उसको और बहुत बेहतर और बहुत फास्ट तरीके से बना सकता है। ही कैटेगराइज द डेटा कि भाई वो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, उसमें यूपी का नाम आया, कहाँ का नाम आया, तो यूपी के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में सिटी कौन सा है, सेक्टर कौन सा है, इस तरीके से चीजें चलती आती है। तो एआई एक अपने आप में बड़ा खतरनाक टूल भी फॉरेंसिक वालों के लिए भी है, एंड एक यूटिलाइजेशन फैक्टर के लिए भी, अगर हमारी हेल्प के हिसाब से हम देखें तो बहुत हेल्पफुल भी है। इट डिपेंड्स हाउ यू यूज इट, हाउ वेल यू यूज इट। और वो यूज तभी हो पाएगा जब आपको फंडामेंटल्स और सारी, एआई के नॉट क्रिएट फंडामेंटल्स, बहुत सारी चीज़ों को लिंक अप नहीं कर सकता। अगर आप स्मार्टली जो स्टडीज या आपकी जो भी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग्स हैं जो आप करते हो, इंटर्नशिप्स हैं जो आप करते हो, एडिशनल नॉलेज को आप कंबाइन करके एआई का एक अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चैलेंजेस इन ट्रेडिशनल इन्वेस्टिगेटर्स वी कैन टॉक अबाउट, कि आज की डेट में जो हमारी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दे आर फिल्ड अप विद लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड द चैलेंजेस आर मैसिव डेटा वॉल्यूम्स। तो आप अभी आप देखेंगे कि एक फोन 1 टीबी का फोन आ गया, तो हमें 1 टीबी का फोन एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक रात 2 रात लग जाती है। एंड दिस इज द ट्रुथ, लाइक वी आर हैविंग सिस्टम विच इज हैविंग 128 GB रैम, हम रैम को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इट जनरली टेक्स दिस मच ऑफ टाइम। अगर हमारे पास मोबाइल फोन है, उसके अंदर में कनेक्टर लगाया है, किसी और टूल से यूज करा, तो वो चलता ही रहता है रातों रात। उसके अंदर में कितना टाइम लग रहा है। फिर उसकी बात आई इन्वेस्टिगेशन की बात। इन्वेस्टिगेशन के अंदर में उसे देखते रहो, इतनी फाइल्स हैं, एक 3 लाख 4 लाख फोटो, मेरे मेरे फोन में कम से कम 30,000 फोटोज हैं जो मेरे पास हैं, जो लॉजिकल डेटा है मेरा जो फोन में है। बहुत सारा डेटा व्हाट्सएप के थ्रू जंक आता है, एवरीबडी सेंडिंग समथिंग, उसका जंक इंप्रेशंस क्रिएट होता है। बहुत सारा डेटा मैं स्क्रॉल करता हूँ, मैं रील्स भी देखता हूँ, मैं इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब कुछ चलाता हूँ, तो मेरा वहां पे भी डेटा आता है। नाउ दिस मच ऑफ मैसिव डेटा, एंड इन्वेस्टिगेटर, फ्यू इन्वेस्टिगेटर, दे आर to do this thing or do this task within 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, kind of difficult. So massive data amounts, ये तो मैंने एक पर्सनल केस की बात बताई। When this is a corporate fraud, right? Corporate investigations है, उसके अंदर में आपके पास मल्टीपल ड्राइव्स हैं, एक सर्वर आ गया आपके पास, सर्वर का डेटा ही उसके अंदर में मल्टीपल लैपटॉप्स हैं। इट बिकम्स हार्डर एंड हार्डर फॉर अस। मोर डेटा, मोर इन्वेस्टिगेटर वुड बी नीडेड। सो आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर में दिक्कतें आएंगी। दूसरी चीज आके डिलीटेड एनक्रिप्टेड ड्राइव। सो वी हैव, कई लोग कहते हैं कि फॉरेंसिक है तो सब कुछ है, भाई फॉरेंसिक में चला गया था, एवरीबडी एवरीथिंग कैन बी रिट्रीव्ड। देयर इंस्टांसेस वी फेल्ड, एंड वी फेल्ड एज यू कैन नॉट, कभी बार कस्टमर ही कह जाता है किस चीज की फॉरेंसिक है यार, ये तो कर नहीं पाए आप लोग। So whether we do our hard work or whether we do, any kind of investigation, 3 4 दिन 5 दिन लगाएं, तो इनक्रिप्टेड, अभी हमारे पास एक बिट लॉकर वाली हार्ड ड्राइव खुल गई, उसके हमने पैसे ले लिए, एक नहीं खुली तो कहता है कि यार तुमने पहली खोल दी, दूसरी खोलो। सो दिस इज अ चैलेंज। इनक्रिप्टेड डेटा बड़ा कॉमन है। डिलीटेड डेटा, मोस्ट ऑफ द फोरेंसिक टूल्स आर फेलिंग। बहुत सारे टूल्स, नोबडी टॉक्स अबाउट दिस इंडस्ट्री, बात ही नहीं करती इन चीजों के ऊपर। टूल्स वाले हैं वो सारे अपने टूल्स बेचे जा रहे हैं। सो एक्चुअली वी परफॉर्मिंग डेली बेसिस इन्वेस्टिगेशन। हमारे पास रोज मोबाइल फोन्स, रोज हमारे पास हार्ड ड्राइव चीजें आती है, हमें पता चलता है, हम खुद एक रिसर्चर बन जाते हैं व्हेन वी डू कीप्स ऑन इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द फोन्स। नाउ द प्रॉब्लम है इसकी, फोन्स या ये जो कंपनीज है मोबाइल फोरेंसिक वाली या डिजिटल फोरेंसिक वाली, या nobody's asking the things कि भाई हमारे पास ये डेटा नहीं आ रहा। गवर्नमेंट शुड मेक द पॉलिसी, जैसे हम टिकटॉक को बैन कर दिया, गवर्नमेंट शुड मेक द पॉलिसीज एंड आस्क दीज पीपल, आस्क एप्लीकेशंस to use a lower level of investigation that can be further investigated by the forensic teams. No forensic knows about the application, कितनी applications हैं। ये हम हमारे फोरेंसिक के टूल्स हैं, कुछ सपोर्टेड एप्लीकेशन जो कॉमन एप्लीकेशन है उनको यूज करते हैं, बाकियों का क्या। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस व्हिच आर देयर इनटू द डिजिटल फोरेंसिक लाइफ। ह्यूमन एरर्स, बहुत सारे ह्यूमन एरर्स हमारी तरफ से हो जाते हैं। मल्टीपल डेटा फॉर्मेट्स हैं, डेली बेसिस के अंदर में डेटा फॉर्मेट्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। सो अब इसके बारे में हम कहें एआई का क्या इंपॉर्टेंस है। सो इफ यू टॉक अबाउट द एआई, एआई कैन रिड्यूस दिस वर्कलोड।
बाय ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव और जो हमारे टास्क हैं, मिस्टेक्स हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने उन्हें एक चंक ऑफ डेटा दे दिया फॉर इमेजेस, एंड मैंने उसे बोल दिया कि दिस इज द इमेजेस, एक फोल्डर है, इसको आप अपलोड करें एंड यू चेक अबाउट एनी थिंग्स रिलेटेड टू द वेपन्स। और आप उसके रिलेटेड आप बात करें तो आप बताएं कि भाई मेरे को किसी चीज़ से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड से रिलेटेड मुझे चाहिए ना। इसी तरीके से इसी रिड्यूस टास्क को करने के लिए एवरी फोरेंसिक टूल, मेजरली मोस्ट ऑफ द फोरेंसिक टूल लाइक मैग्नेट एक्सियोम, like Celebrite, Insights, the newer tools like uh, XRY. So every tool is implementing this AI technology. So actually उन्होंने अपना टूल तो उनका बेहतर था ही, तो एआई को उन्होंने डाल दिया, तो एआई के उनका भी टाइम बचा और हमारा भी। अब मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल बताता हूँ। मैं एज ए इन्वेस्टिगेटर एक फाइल को देख रहा हूँ और फाइल का मुझे नहीं पता सिर पैर ये कहाँ से फाइल आया, और आई डोंट नो अबाउट द एक्सटेंशंस। नोबडी कैन क्लेम कि फोरेंसिक हमने पढ़ ली है। इट्स अ डेली बेसिस लर्निंग। मुझे नहीं पता वेयर दिस फाइल इज कमिंग फ्रॉम, वेयर इट इज स्टोरिंग, व्हाट इट मींस। एक बहुत टिपिकल सा एक डिफरेंट एक अलग सा नाम है। सो आई कैन गूगल इट, आई कैन सेंड इट टू एआई एंड से लाइक जस्ट मुझे इसका बताओ कि यार ये किस तरीके से जनरेट होती है, वेयर दिस कमिंग फ्रॉम, हाउ दिस जनरेटेड। सो इट हेल्प मी इंटरप्रीटिंग द थिंग्स कि दिस पर्टिकुलर लाइन ये कॉल लॉग का डॉट डीबी का डेटाबेस है जो नॉर्मल कॉल के हिसाब से आता है। सो मेरे को पहले से फंडामेंटल्स पता है, मेरे को अच्छी तरीके से नॉलेज है, मैं डेली बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। तो मैंने एआई को बोला कि भाई मुझे असिस्ट कर, तो एआई असिस्टेड मी एंड मैं अपनी चीज़ों पे फार्म हो गया। आई कैन रीवैलिडेट दिस थिंग कि ये सही है, तो उसको रीवैलिडेट करने के तो मेरे पास एक एआई असिस्टेंस वाली चीज़ आ गई। सो जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेटर असिस्टेंस। सो एआई को डायरेक्टली हम नाम ना देके कि भाई एआई से कर दिया सारी चीज़, तो चीज़ अलग हो जाती है ना। रिपोर्ट राइटिंग के अंदर में कंटेंट को आपने वेरीफाई करना है। सो आई कैन से कि एआई का एप्लीकेशन अगर आप बात करेंगे तो फेस रिकॉग्निशन के फॉर एग्जांपल हम लें तो उसके अंदर में अभी एक हमारे पास एक लेक्चरर साहब आए। उन्होंने बताया कि यार मैं गया, मेरे को साइट पे बुला दिया, मैं तो साइबर का बंदा हूँ, और एक बॉडी पड़ी हुई थी ट्रेन ट्रैक पे, बस कल पूरा निकला हुआ था, ये चीज़ है। मैंने एआई को बोला जनरेट कर दिया। तो द नॉर्मल पर्सन वुड नो। और उन्होंने बहुत अच्छा कोई टूल, मुझे आई एम नॉट नेमिंग दैट टूल, उन्होंने बहुत अच्छा टूल कोई यूज किया और डिफरेंट था, मतलब नॉर्मल वालों से डिफरेंट था, थोड़ा हार्ड सा नाम है। उसको उन्होंने किया तो उन्होंने एक इमेज बना दी, इमेज से वो थोड़ा सा सॉल्व हुआ केस, और वो केस सॉल्व हो गया। सो दिस इज ह्यूमन रिकॉग्निशन के अंदर में जिस तरीके से हेल्प करी। इमेज एंड वीडियो क्लासिफिकेशंस आपकी होती है नॉर्मली, जिसको इमेज कैटेगराइजेशन बोला जाता है कि मोबाइल फ़ोन्स के अंदर में और आपके कंप्यूटर्स के अंदर में या किसी भी डिजिटल डिवाइसेस के अंदर में बहुत सारी इमेजेस होती हैं। आज की डेट में कोई भी डिवाइस उठा लो, उसके अंदर में हर चीज़ की इमेज है। अगर पीपीटी बना, पीपीटी के अंदर भी इमेजेस है। कुछ भी आप बनाओ उसके अंदर में इमेजेस ही हैं। सिस्टम इमेजेस अलग होती हैं, यूज़र इमेजेस अलग होती हैं। किसी को 1 टीबी का फ़ोन और उसके अंदर में 800 जीबी भरा हुआ है, तो आप अपना सिर खुजाओगे पहले कि इसको काम को करना कैसे है। और जंग डेटा, कैशेज़, बहुत सारा स्टफ आपका नॉर्मल लाइफ में चलता रहता है। आपको पता भी नहीं है कि कितना निकलेगा। सो वो उन सबको कैटेगराइज़ेशन करने के लिए एआई इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, जिसके अंदर में से वो बड़े फास्ट पेस के अंदर में से आपको ये बता के दे देता है, भाई इतने वेपन्स हैं, इतने एक्सट्रीमिस्ट सिंबल्स हैं, इतने रिलीजियस सिंबल्स हैं, इतने हमारे पास टैटूज़ वाले बंदे हैं। एआई आल्सो फेल इट कैन नॉट गारंटी कि दिस इज़ 100% और 50%। इसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। तो आप एआई को बोलोगे अब मुझे 50% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप मुझे चीजें दो जो वेपन्स हैं, तो वो 50% के हिसाब से बता देगा। वो उसमें छोटी छोटी चीज फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव भी डाल देगा। सो यू कैन नॉट एज एन इन्वेस्टिगेटर, एज ए फोरेंसिक एक्सपर्ट, यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन एआई। तो आपने ये सोचने वाली चीज है कि आप किस तरीके से उसका यूज करते हो। ऑडियो एनहांसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमारे पास एक बड़ा अच्छा केस आया जिसके अंदर में अगेन ये हस्बैंड वाइफ वाले मैटर को ज्यादा ही आते हैं हमारे पास। इट्स नॉट लाइक हम यही करते हैं, बट एक लॉयर साहब थे, वो हमारे पहले क्लाइंट रह चुके थे और बड़े ट्रस्ट वर्दी के साथ आए, क्योंकि जब भी वो आते हैं कि भाई चाय मंगाओ, मट्ठी मंगाओ, सारी चीज करी। और अच्छे खासे लॉयर हैं, यंग हो गए, मेरे ख्याल से 49-50 के हो गए होंगे। तो हमारे पास आए, उन्होंने 3 ऑडियो फाइल्स दी हमें। 3 ऑडियो फाइल्स की, सर मेरा डिवोर्स का मैटर है और मेरी वाइफ के अगेंस्ट में मुझे एविडेंस मिल गए फाइनली। मैंने कहा वेरी गुड सर। तो उसने कुछ इमेज वो हमें ऑडियोज दी, हमने वो ऑडियोज को चेक किया। ऑडियोज के अंदर में पता चलता है
कंप्लीटली फाइन, वेरी गुड सर। मैंने कहा सर सही है, बिल्कुल हम रिपोर्ट दे देंगे, हम भी खुश। दूसरी ऑडियो को वेरीफाई किया अगेन, फिर हमने चीज़ें की, वो भी ऑडियो सही निकली। तीसरी में हमने किसी को बोल दिया कहीं ऐसी लगे होंगे कहीं पैसे बनाने में, कहीं बड़े केस में, उस केस को हल्का सोच के छोड़ दिया ना। जब फाइनल स्टेज पे था कि थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाया कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब इसने दी क्यों है, और वो बार-बार पूछ रहा है कि भई बताओ सर क्या हुआ? रिज़ल्ट बताओ, रिज़ल्ट बताओ। So I personally, when I, before writing a report, like we examine it properly, कहीं by chance human errors या peer review हमारी तरफ से कोई गलती से गलती ना रह जाए। So multiple time reports हम read करते हैं, because I don't sign other reports than digital evidences. मैं ये मानता हूँ कि डिजिटल एविडेंस को ठीक-ठाक तरीके से पढ़ा है। काफ़ी टाइम हो गया, बहुत सारे एविडेंसेस, बहुत सारे डिवाइसेस को पढ़ा है, तो थोड़ा ठीक से करो, कहीं ऐसी बेइज़्ती ना हो जाए, डिजिटल डिजिटल चिल्लाते रहते हो, तुम्हारा तो यही सही नहीं है। एंड इट वाज़ एक्चुअली अ केस कि जिसके अंदर में वी कुड हैव मेड द एरर। तो उस केस में क्या हुआ कि हमने वो निकाला कि इट सीम्स वेरी नॉर्मल कि एक ऑडियो है, बट व्हेन वी गेट एग्जामिन, हमारे मल्टीपल पैरामीटर्स है जिसके अंदर में हम एक ओपिनियन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये रेड है तो रेड क्यों है? उसने भी कहा रेड है, इसने भी कहा रेड है, इसने भी कहा रेड है, मुझे भी रेड लग रहा है। तो मैंने बोल दिया सबकी ओपिनियन को मिलाकर मेरी ओपिनियन भी रेड की है। तो हमने जस्टिफिकेशन दे दिया। बट इस केस में क्या हुआ कि द ऑडियो व्हिच वाज़ देयर, आई डोंट नो, दिस वाज़ द फर्स्ट केस टू अस। जब हमने किया था काफ़ी टाइम हो गया, तो इस केस को जब एग्ज़ामिन किया, द गाय एक्चुअली यूज़ हर वाइफ्स वॉइस सैंपल्स, रिकॉर्डिंग करता था अपनी वाइफ की। तो जो वाइफ की रिकॉर्डिंग थी, उन रिकॉर्डिंग को एक एआई की इसकी वेबसाइट पे गया एंड उसके सैंपल्स लोड किए, और उसको एआई टेक्स्ट टू स्पीच आता है नॉर्मली। आप अगर अपनी भाषा में तो आप स्पेनिश भी बोल सकते हो, गाना भी गा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो उसने उसके 2-3 वॉइस सैंपल्स उसको कराए, तो एआई ट्रेन्ड हो गया कि भाई ठीक है, मेरे को समझ में आ गई वॉइस कैसे बोलती है। 3-4 रिकॉर्डिंग, 5 रिकॉर्डिंग जो भी एक्स वाई जेड उसने डाली होंगी। उसने कहा 20 लाख रुपए दो, नहीं तो मैं पुलिस वालों से ये करवा दूँगी। उसने धमकी भरा एक बड़ा सॉलिड मैसेज डाल दिया एंड उसको हमें एग्ज़ामिन करवाने के लिए आया कि आप एक रिपोर्ट दे दो, ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट। 63(4) वी कैन नॉट गिव, तो ऑथेंटिकेशन रिपोर्ट की माँगा उसने, तो हमने कहा चलो यार चेक करके देखते हैं। While examining that audio, we were able to detect which website it was using, what exactly text he was used, उसका नाम क्या बना, नाम क्या चेंज किया उसने। सो ही एक्चुअली चेंज द नेम अकॉर्डिंग टू द अदर वीडियोस। जो ऑडियोज, जो पहले की ऑडियोज जिस तरीके से उसने नाम की थी, वो एक्चुअल वीडियोस थी जो उसने मोबाइल से निकाली थी, एंड इसका भी नाम उसमें ही चेन में लगा दिया कि इसके अंदर में से, सो दैट इट लुक्स वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी 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 नॉर्मल, की जिसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अगर मैं रिपोर्ट दे भी देता शायद ही कोई बंदा पकड़ भी पाता, दिस इज द रियलिटी, कि अगर रिपोर्ट दे दी तो आगे भी वो इसी तरीके से चल जाती। इंडिया के अंदर में क्या है, खोटा सिक्का चल गया, नहीं तो कोई बात नहीं। ना लॉयर को कोई मतलब है, ना जज को कोई मतलब है, एग्जामिनेशन के अंदर में दूसरी पार्टी पैसे नहीं देती, एक्सपर्ट को छोड़ो। सो दिस व्हाट हैपेंस एंड वी डिटेक्टेड इट। हमने उससे बात करी, मैंने कहा, भाई साहब इसमें तो ये कर रखा है। एंड उस दिन से हमारी उस लॉयर के साथ दोस्ती खत्म हो गई, कि ना कभी चाय ना कभी केस। एंड नेवर कम बैक टू इवन आस्क फॉर द पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का हमारा फायदा हो गया, कुछ पैसे हमें दे दिए, तो ये सारी चीज निकल गई। चैट एंड ईमेल एनालिसिस हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि चैट्स के अंदर में भी हम कई सारी चीज एआई के थ्रू हम प्रॉम्प्ट दे के हम चैट को निकाल सकते हैं। मालवेयर डिटेक्शन है हमारे पास, मतलब एआई जनरेटेड में बताऊंगा कि कई सारी ह्यूमनली रिटन टेक्स्ट होता है, कई बार एआई रिटन टेक्स्ट होता है। देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स into the market which can detect the AI image, created images, created videos, audios, even the text generative AI जिसे हम कहते हैं, उसको भी हम डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। दिस इज मल्टीपल टाइम यूजिंग इनटू द generating new different kind of text. क्रिप्टो ट्रेसिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेसिंग, फिर हमारे पास लिंक एनालिसिस। सो एनी लिंक विच इज क्रिएटेड or generated onto the public network, you can create or you can check the link where it is coming and where onto the web it is actually there. This is about the applications which we use onto the multiple multiple platforms, for example applications, or in forensic also. Now come about the future of AI. So yes, the future is very bright. Reason being, it can be used by both. It's a challenge onto the one front. It says ki newer the
threats are coming due to the AI. It is very easier. सर एक सेकंड रुकना, एक सेकंड सर, एक कॉल, अभी 10 मिनट में कॉल करता हूँ आपको दोबारा से। मैं टाइम दे देता हूँ आपको, कल का टाइम है हमारे पास, तो कल दे देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। सो फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, इफ इसके हिसाब से हम कहें तो इट्स लाइक बहुत सारी डी फेक डिटेक्शन के अंदर में काम आता है, बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट की सर्विसेज के अंदर में अब एआई का बड़ा जनरेटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, न्यूअर टेक्नोलॉजी एआई सेंटर्स खोलने के लिए, अपना खुद का एआई बनाने की कोशिश कर रही है। सो एआई मेक यू फास्ट, एक पेस के अंदर में आपको आगे ले जाता है। एक नॉर्मल बंदा आप एक रेस में है, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयमेंट हमारे ऑफिसेज में यूज हो रहा है। पीपीटी बना दो, अभी आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ तो ये भी एआई से कुछ ना कुछ हमने उठाया हुआ है, इसमें से बहुत सारी चीजें कि यार क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किसी के पास टाइम नहीं है तो थोड़ा बहुत एआई को बोला, उसको ट्रेन किया, यार मुझे एक बढ़िया सा, मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, इससे रिलेटेड बनाओ। सो इस यूज के बारे में टीचिंग स्टैंडर्ड्स या स्टूडेंट कैन, एक इन्वेस्टिगेटर अपने आप बहुत कुछ लर्न कर सकता है। एक कम टाइम के अंदर में पूरा फोरेंसिक का ज्ञान, आप उसे बोलोगे मुझे एक दिन में फोरेंसिक सिखा दे, तो एक दिन के हिसाब से यूनिवर्सिटीज की भी जरूरत शायद खत्म कर दे है। सो सेल्फ डिग्री भी देने लग जाए कुछ टाइम में। सो देयर लॉट ऑफ फ्यूचर्स। ऑटोनोमस एविडेंसेस ट्राइज, अभी वो बहुत सारे टूल्स के अंदर में ये डाल दिया है कि आपने इमेज बनाई, इमेज को लोड कर दिया, इस तरीके का लेवल है, और उसके अंदर में इन्वेस्टिगेट करके उसने सारी चीज डाल दी। लेबोरेटरी को असिस्ट कर सकता है, किसी को लैब ही बनानी है तो अपने आप बोल दो कि मुझे एक बढ़िया सी लैब बना के दे दे। रियल टाइम सीसीटीवी एनालिसिस जो इंडस्ट्री है उसके अंदर में ऑलरेडी एआई डिटेक्शंस लगा दिए, फेस रिकग्निशंस लगा दिए, आपके नंबर हाईवेज के अंदर में आपने काउंटिंग वगैरह सब एआई जनरेटेड कर दिए। न्यूअर थ्रेट्स, आप ये चाह रहे हैं कि जैसे एआई का फ्यूचर है, जितना इसका यूज है उससे ज्यादा मिसयूज है, तो उसके बारे में हमारी तरफ से कोई बात नहीं करती थी यार। लॉट ऑफ चैलेंजेस। एक आम बच्चा, छोटा सा बच्चा एक बहुत अच्छा कोड बना सकता है, पाइथन पढ़ी भी नहीं है उसने, कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। वी कैन जो हम मैथमेटिशियंस आईआईटीएंस की बात करते थे कि एआई इज आईआईटी का एक बच्चा, ये मान के चल लो आप, और ज्यादा ऊपर बढ़ाना चाहो, कौन सा यूज कर रहे हो अपने आप में। आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो मैं ये कहूँगा कुछ पैसे अपनी तरफ जोड़ के एआई के मल्टीपल कोर्सेज करो, इफ यू वांट टू रियली गुड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। सो इट्स बोथ द साइड, अच्छा भी है बुरा भी है, बट डिपेंड्स। लाइक फ्यूचर इन्वेस्टिगेटर मस्ट कंबाइन फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, जो हमारे नई एक्सपर्टीज हैं उनको एआई के साथ मिक्स करके हम इम्प्लीमेंट करें नई चीज़ों के साथ। वी आर कमिंग विद द प्रोडक्टिव थिंग्स, जिसके अंदर में से हम बात करें कुछ टॉपिक्स के ऊपर कि एआई कितने सारे क्राइम्स के अंदर में हमारे साथ ही बहुत सारे केसेस के अंदर में इन्वॉल्व हो चुका है। अब हम उसको किस तरीके से देखते हैं कि आगे के थ्रेट्स इतने डिफिकल्ट हो सकते हैं कि अगर आपने उसको ट्रेन कर दिया कि एंटी फोरेंसिक टेक्निक यूज करनी है, कुछ पता ना चले। अभी मैं एक नॉर्मल सा, आई डोंट, इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट मैं अभी किसी से डिस्कस कर रहा था, मोस्ट ऑफ हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं, जो हमारे जो बड़े बड़े एग्जाम यूपीएससी है, सारे बंदे एक ही तरीके की चीज यूज करते हैं, टेक्निकल टूल है वो, किसी भी डिटेक्ट टास्क बार में भी नहीं है, किसी फोरेंसिक टूल के अंदर भी डिटेक्ट है। देखो एक रीजन ये है कि आप पहचानोगे किसी चीज को, कब व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप डॉट डीबी एक फाइल डेटाबेस है, जब आपने व्हाट्सएप ही नहीं पता तो उसका डेटा आपको सिक्योर ही लगेगा। सो ऐसी ऐसी एप्लीकेशन हैं, ऐसी ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं जो किसी को पता ही नहीं है, तो उसमें मैं भी फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के तौर पे क्या करूँगा। आज की डेट में हो क्या रहा है कि नॉर्मल मोबाइल आया, कंप्यूटर आया, उसने बताया कि इसके अंदर में से देखो कि कोई ट्रोजन तो नहीं है, वायरस तो नहीं है, मालवेयर तो नहीं है, वो सारी चीज़ों को डिटेक्ट करके बता देगा ना। एआई का सारा जनरेशन पब्लिक डेटाबेस से है। If the things are available onto the public media, it will give you the data. If they are not there, तो सारी चीज नहीं है। एआई के साथ we need to make sure कि it is, we cannot truly believe this. There are a lot of false negative, false positive. It's not 100%. बहुत सारे errors हैं उसके अंदर में, जैसे human errors हैं, ऐसे ही हमारे AI errors हैं। We can utilize AI with human intelligence, जो human कहते हैं जिसे हम, we can utilize with OSINT, we can combine both things with the AI। तो आपको बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन ईज मिल जाती है, कि पहले की इन्वेस्टिगेशन बड़ी डिफिकल्ट होती है। अगर मेरे को ओसेंट भी निकालना है, अभी फॉर एग्जांपल
मेरे को देखना है अब ये अपना क्या पासवर्ड क्या है, मेरा कोई पासवर्ड लीक तो नहीं, तो आई मस्ट गो हैव आई जस्ट पॉन्ड, उसके ऊपर गए, नाम डाला, मेरे को ये बता दिया। बट एआई के अंदर में ऐसे यही आपने बोला मुझे ढूंढ के बताओ मेरे पासवर्ड तो लीक नहीं है, तो एआई को कमांड डालते ही वो अपने आप ही सारी चीज देख के दे देगा भाई, जाएगा वो उसी वेबसाइट पे। बट उस पूरे प्रोसेस को बहुत ईजियर करके आपको सारा डेटा दे रहा है। सो दिस इज वन ऑफ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस। नाउ अब आ जाते हैं हम मेन यूज ऑफ एआई, राइट, विच इज लाइक आप जाते हो, रिपोर्ट बना, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का काम है, इन्वेस्टिगेट कर दिया, आप एआई को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, 3D स्कैनर कर दिया, मुझे बताओ कि प्रोबेबल एविडेंस क्या है, उसने बता दिया। अब आप अपनी इंटेलिजेंस को भी यूज करोगे, एआई को रेफरेंस, अगेन असिस्टिंग एंड रेफरेंस आप ले सकते हो। बट आप ये नहीं कि पूरा उसके जो उसने बोला वो सारा सही हो गया, बिकॉज एक्चुअल क्राइम सीन पे आप हो, आप उसे एक इमेज भी डिग्रेड हो जाती है व्हेन इट लोड्स, तो आपने उसको एक असिस्ट कराने के तौर पे यूज करा। आगे की बात आई हमारे पास एनालिसिस की, यू कैन यूज अगेन यूज इट एज असिस्ट करने के लिए। बाकी आई हमारी रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग शुड बी ग्रामेटिकल एरर्स और राइटिंग के लिए आप करें। एआई डोंट हैव फीलिंग्स, वो अपना प्रोफेशनल सारी चीज देगा। यू नीड टू रीचेक, रीवैलिडेट, पीयर रिव्यू लो, एक्सपर्ट से बात करो, सारी चीज। अभी मैंने किसी की रिसर्च देखी, इतनी अच्छी रिसर्च, लड़की को इंग्लिश बोलना नहीं आता एंड शी वाज लाइक फ्लुएंट, और एक एक टॉपिक हमें पढ़ने के लिए आया था एंड शी डोंट नो एनीथिंग अबाउट। तो ये मिसयूज है कि अगर इन्वेस्टिगेटर सारे सारे एआई के ऊपर ही जा रहे हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है केवल एआई के हिसाब से, तो चीजें डिफरेंट तरीके से जाती हैं। बट यस, फ्यूचर का स्कोप है कि बहुत वेराइटीज हैं, बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं एंड फ्यूचर बड़ा ब्राइट है कि हम एक इन्वेस्टिगेशन को जहाँ बहुत टाइम लेते थे, आज मैं नॉर्मल तरीके से काम कर सकता हूँ। हमारे बाकी के फोरेंसिक के अंदर में तो बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एआई यूज हो रहा है, बट स्पेसिफिकली डिजिटल फोरेंसिक के सारे ऑलमोस्ट सारे टूल्स, हर टूल्स अपने आप के एआई जनरेशन वाली चीज लगा रहा है, ऑटोमेटिकली फास्ट कर दिया है, चीजों को रिलेट कर रहा है, डेटाबेस हिस्ट्री को बता सकता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशंस, अगर आपको किसी भी चीज का इंटरप्रिटेशन चाहिए सो दैट आप उसे कोर्ट में रिप्रेजेंट या प्रेजेंट कर सकें, उस केस में आपको एआई थोड़ा असिस्ट अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकता है। आप ये देखेंगे एआई का टेक्स्ट है, एआई का इमेज क्रिएटेड है, यू कैन डिटेक्ट दैट थिंग। तो कंप्लीट रिलाइंग ऑन एआई इज समथिंग डिफरेंट। बट अगर आप ये बात करते हैं कि हम एक अपनी अपनी तरीके से जो फोरेंसिक हमने जो सीखा हुआ है, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ा हुआ है, जो प्रैक्टिकल किया हुआ है, crime scene, it's completely different. AI cannot be used to investigate a crime scene, but yes, it can be used to assist an investigator. So this is my point of view, which I believe. It's transforming criminal investigations. It can speed up the process, improve the speed, efficiency, accuracy को आप relate कर सकते हो. You can ask questions. You can use it as a peer review. आप अपने AI को peer review रीडिंग्स के लिए यूज कर सकते हो, क्या मेरी फाइंडिंग ठीक है। बट फाइनल कंक्लूजन मस्ट बी ऑलवेज बी रिलाई ऑन टू द ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हु हैव फिजिकली, और जो अपनी तरफ से प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन स्किल्स के साथ सीखे थ्रू द यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च वर्क्स। That's it from my side. If you have any questions, you can come up with this. My name is Ashish Kuntal. Again, I'm there on LinkedIn, every social media. You can come up. Uh, and Baki, if you have any questions. So one is, as a forensic student, cybersecurity aspirant, what are the skills one should have to land a good cyber forensic job? Okay, from BTech. So from BTech and computer science students, I must say, like, you go and check our YouTube channel. There's a journey. There's if you go on Hawkeye Forensic, there was a student 6 months before. I guess it took 6 months. He's now a JSO in FSL. One is in SSO in Bihar FSL. BTech, BCA, MCA, MTech, with reference to have some sort of certification and extra skills. With having a hands-on experience, you can be directly go on to the cyber forensic jobs. हमारे इंस्टाग्राम पे या किसी भी चैनल के ऊपर बहुत सारी पोस्टिंग्स डली हुई हैं जॉब रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड. So not we are hiring those people. We are trying to just, people can reach out. You can see the posts on our Instagram page. You can see the posts on our Instagram page.
With this, we come to the end of today's technical sessions. We sincerely thank our esteemed speaker, Dr. Ranjit Singh, and Mr. Ashish Singh Kuntal for sharing their valuable knowledge, practical insights, and real-world experiences in the field of crime scene investigation and forensics. We are confident that today's sessions have been both informative and inspiring for all the participants. This is not the end of our journey, it's just the beginning. Tomorrow, we will continue with more exciting session, hands-on demonstrations, and advanced concepts that will further enhance your understanding and practical skills in digital and cyber forensics. We request everyone to be present on time so that we can begin the sessions as scheduled and make the most of the learning opportunities ahead. On the behalf of the Department of Forensic Science, School of Liberal Arts and Sciences, Modi University of Science and Technology, thank you all for being with us today. We wish you a pleasant evening and look forward to welcoming you back tomorrow. See you tomorrow. Have a wonderful evening. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, everyone.